लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं हैं। Facing the heat, Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And a day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting app scam, Republic's four-part investigation has now sparked a major controversy. It has become the biggest talking point in politics today. In the Durg election campaign, the Prime Minister referred to it, launching a scathing attack on the Congress, asking why is the Congress rattled over the Dubai connection. Listen in. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है।
And as the Republic Sting unearths new and unavoidable details of the Mahadev betting app scam, there's a huge political storm that has erupted. The BJP has hit out at the Congress and questioned whether Hawala operators were behind the funding of the party's campaigning and elections. Here's more. Let's listen in. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Asim Das to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. Shubham Soni, in his written admission, has stated that till now, over 500 crores has been given in bribes for political protection by the illegal betting racket, namely the Mahadev online book promoters in Chhattisgarh. However, this is not, I believe, the only evidence available. There have been other arrests as well. One of Chandrabhushan Verma, who has admitted to being a bridge between Mahadev promoters and the Chhattisgarh political executives to ensure protection from Chhattisgarh police. Upon arrest, Chandrabhushan Verma has admitted to have handled 65 crore rupees of bribe amounts. And as we were saying, the political landscape rocked by the findings of the Republic Sting on the Mahadev betting app scam. And the man in the eye of the storm, Chief Minister Bhupesh Baghel of Chhattisgarh, is silent on the 508 crore rupees charge. The Chief Minister of Chhattisgarh, Baghel, is now questioning the investigating agencies instead, calling the allegations baseless. Baghel has now asked why have no arrests been made so far. Listen in. ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे दो घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। दो घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर
होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध हैं। And stung by the new allegations that are being leveled against Baghel and the party, the Congress is on the back foot but is denying all the charges. It is now alleging a political witch hunt by the BJP against Chief Minister Baghel. Listen in. स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? कोई भी बात आई, सिर्फ खोखला आरोप, और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं। वही कोशिश ये यहाँ कर रहे हैं। कौन सा सबूत उनके पास है और कैसी ईडी? ये वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहाँ नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहाँ से निकल रहे हैं, और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो। जिसके घर में पैसा पकड़ाया है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसके घर में आपको एक नया पैसा मिला? उसके तक पहुंचने वाले एक नए पैसे की बात हुई? आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपने 508 करोड़ रुपए की बात कर दी। एक नया पैसा किसी के घर में पहुंचा है, आपके पास कोई सबूत है क्या? Coming up in other news, Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. Also coming up, more than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे with attractive interest rates and instant sanction. I have obsessed over the last 10 years in just figuring out how I can make young women more unstoppable. And as an entrepreneur, you're only as good as your last big product, your last financial year success. And that's why it's not a one-time breakthrough, but you have to keep doing it over and over again. And I think as Sugar, we've been able to do that because we're obsessed. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. It don't matter where it takes you, 'cause it's never gonna break you. Yeah, all you need to do is fly. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. You are the one. Unmatched, unequaled,
Unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. Isaf Small Finance Bank. Joy of banking. हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ, और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा? अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर TMT का वार होगा। रॉकेट सिंह। अर्फी? लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील TMT बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. App scam has led to a huge storm that is rocking political circles. As the face-off continues, as the war of words continues to rage on, we tell you that it's a 4-part investigation. The first, in part 1, we reveal how police worked in connivance with the accused. In part 2, we reveal the political links to the scam. And what about part 3? Well, here is part 3, in which we investigated and focused on whether the Chief Minister of Chhattisgarh was aware of the scam at all. Take a look. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer, says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं।
ये खुल के नहीं बोलते थे विनोद जी। हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो ओके, मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम, ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं। ये जो रेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And we are bringing you exclusive details that we unearthed. Our special investigation team unearthed as it investigated the Mahadev betting app scam. Viewers, that was part 3. And in part 4, we found out about whether money that was where the money was used to fund elections as part of this scam. Take a look. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है, तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए, अभी नहीं, पहले किए हैं। पहले किया 2022 में किया था। 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है, पैसे के थ्रू हुआ। Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। प्राइस तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। Hi guys, happy Diwali. चलो दीप जला के हर घर सजाए रे, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होंगे रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे
हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. Just another tycoon. Hustling way too early in the morning. Passing on this happy tune. Helping babies feel at ease. Aw, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon. Volkswagen. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, सपनों में रंग भरने की बेफिक्र चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. जब डेटा ब्रीच अलर्ट के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। हूबहू तू मुझसा है, रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। Maruti Suzuki Arena. Find your match. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. New Hawkins ceramic non-stick pressure cooker. Less oil, tasty and healthy. First time in India.
Hawkins Ceramic Non-Stick. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Indore Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on the Dubai connection. Of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of the Congress. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. हम नहीं कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं हैं। Facing the heat, Congress is on the back foot now, alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And thank you for tuning in. You're watching live and breaking at 2 p.m. I'm Suesha Samant, and well, a day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting scam, Republic's 4-part investigation that has now become the biggest talking point. In Durg, while on a campaign trail, Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Congress, asking why is the Congress rattled over the Dubai connection. Listen in to what he said. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है,
और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। As a political storm continues to brew over Republic's four-part investigation hitting out at the Congress, BJP has now alleged that Hawala operations were used by the promoters of Mahadev betting app to fund Congress's election campaign. Listen in. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Asim Dash to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. Shubham Soni, in his written admission, has stated that till now, over 500 crores has been given in bribes for political protection by the illegal betting racket, namely the Mahadev online book promoters in Chhattisgarh. However, this is not, I believe, the only evidence available. There have been other arrests as well. One of Chandrabhushan Verma, who has admitted to being a bridge between Mahadev promoters and the Chhattisgarh political executives
to ensure protection from Chhattisgarh police. Upon arrest, Chandrabhushan Verma has admitted to have handled 65 crore rupees of bribe amounts. If your sting operation and investigative report is true, then it would be very damning on the Chhattisgarh government in terms of protecting something which was an illegal operation. What has been reported in the media is that this betting scam appears to have been in hundreds of crores a day, which is a very large sum of money. It was obviously not compliant to the rules or the laws. And if, as your channel is reporting, that people on camera have been talking about payoffs and also perhaps accepting amounts, then it's even more worrisome that this was happening with no action from the law enforcement agencies or the police in the state. And that then would raise a question that if the law enforcement or police agencies in Chhattisgarh were either unaware or were looking the other way, then it speaks volumes about the governance level in the state, about the political leadership in the state. And therefore, one would need to now see what is the priority of the government there or the people in power there. Is it to see that law reaches its logical end and whoever are guilty of breaking the law, due action happens against them? Or will there be an attempt to protect? Absolutely. So we've also exposed a very crucial point over here that a lot of money that was moved around in this scam was also being used to fund these polls, these inching polls in the state. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. And that is hitting out at the root of democracy. And certainly, any responsible political person or party is committed to the electoral process being in its purest form, in the correct manner as envisaged under various laws, and certainly it cannot be in the manner in which, if you are indicating, it has happened. Now that's worrisome also because today it could be a betting scam, tomorrow it could be related to funds coming from anti-national sources, on a third day it could be coming from those who are doing subversive activities within India. So therefore this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. ये स्टिंग उसी बात की पुष्टि करता है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं पहले से भ्रष्टाचार के। लेकिन ऐसा दिमाग लगा लगा के ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 508 करोड़ रुपए एक ऐप के खेल में, गेमिंग ऐप के खेल में, मेरा तो माथा चकरा गया सुन के। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गुनाहगार, जो ऐसे गुनाह करने वाले लोग हैं, वो बच नहीं पाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता भी देखेगी कि अब समझ में आएगा कि जो बीजेपी की सड़कें बनवाई हुई थी टूट रही, क्यों मरम्मत क्यों नहीं हो रहा है, ये जो पूरी छत्तीसगढ़ की बदहाली क्यों है, अस्पताल क्यों बदहाल हैं, लोग क्यों ऐसे बेरोजगार हैं। तो इसका कारण ये है कि सरकार तो लगी है लूट करने में। और मुझे तो इसमें एक और शंका आ रही है, देखना पड़ेगा कि वो पैसे आए कैसे। कहीं जो मुझे दिखने में लग रहा है कि इन पैसों को गेम में घुमा करके व्हाइट करने की भी कोशिश हो सकती है।
Moving on, silent on the 508 crore charge, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel is now questioning the investigation agencies, instead calling the allegations baseless. Baghel has asked as to why no arrests have been made so far. ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कह रहे दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं। On the back foot, the Congress is now alleging a political witch hunt by the BJP against Bhupesh Baghel. Listen in to what they're saying. ये सब पहले बात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन की बात कर सकते हैं? तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब। उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी ये कहानी कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? कोई भी बात आई सिर्फ खोखला आरोप, और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं। वही कोशिश ये यहाँ कर रहे हैं। कौन सा सबूत उनके पास है और कैसी ईडी? ये वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहाँ नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहाँ से निकल रहे हैं, और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा,
कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो। जिसके घर में पैसा पकड़ाया है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसके घर में आपको एक नया पैसा मिला, उसके तक पहुंचने वाले एक नए पैसे की बात हुई। आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपने 508 करोड़ रुपए की बात कर दी, एक नया पैसा किसी के घर में पहुंचा है, आपके पास कोई सबूत है क्या? And even as the political face-off continues to rage on, Republic has brought you an exclusive investigation into the Mahadev betting scam. Now, the first part of this investigation revealed how the police was in connivance with the accused. The second part of this investigation revealed the political link of the scam. And now, we are getting to the third part of the investigation. In this third part, Republic is focusing on whether Chief Minister Bhupesh Baghel of Chhattisgarh was aware of the scam. Take a look at this report. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जो कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं। ये जो रेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And Republic now brings you this exclusive investigation into the Mahadev betting scam, where the fourth part of this expose is about finding out if money was used to fund the election campaign. Take a look at this next report. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते।
मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। पहले किया 2022 में किया था 2022 में उन्होंने किया, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है, पैसे के थ्रू हुआ है। Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. But that is time for us to slip into a very short commercial break. On the other side, we get you details as Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. 4x4 with 7 terrain modes and autonomous level 1. The advanced MG cluster, drive unstoppable. ये वाला तो गूगली है, वो वाला ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs। मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। टैग। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए? स्मार्ट बाजार चलिए। Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. Phone Pay accepts money from any app, whatever's your thing. Actually, I'll take this thing also. Yeah. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. Isaf Small Finance Bank. Joy of banking. कटिंग देना। What happened to the test bag? Already tested by nature, sir. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई
वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। महादेव का नाम भी यहां पर खराब किया। और मैं तो ये कहूंगा कि घोटाले पे घोटाला तो किया ही, ये महादेव ऐप से सामने आया कि कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस ने, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। विदेशी पैसे नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों का कांग्रेस उपयोग कर रही है चुनाव जीतने के लिए। उसका उदाहरण महादेव ऐप के 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात जो सामने आई है, इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के पैसे से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो चुकी हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात आपके सामने करूं तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं और आपको जानकर भी हैरानी होगी। इसका एक मैं आपके सामने है। पहली थी जैसे चुनावी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होगी, नहीं किया। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिए। फिर महिलाओं को कहा था हर महीने 1500 रुपए देंगे। लाखों बहनें अभी तक इंतजार कर रही, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, नहीं दी। उल्टा बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बागवान तय करेंगे कि फलों की कीमत क्या होगी। बागवानों ने फल पानी में बहा दिए, ऐसी हालत हिमाचल प्रदेश में हो गई। युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड नहीं किया। मोबाइल क्लिनिक तो क्या देने थे, जो थे वो भी बंद कर दिए। और पशुपालकों से कहा था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, खरीद नहीं की। और ये कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, वो भी नहीं खरीदा। क्या ये बहनों से जो वायदा किया था कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 रुपए महीने देना, वो नहीं दिया। ये वायदा किया था कि क्या देंगे, जगह जगह जाकर 67,000 पद भरेंगे, नहीं भरे। मैं हिमाचल की बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस यहां पर आकर बड़े बड़े वायदे कर रही है। मैंने कांग्रेस की बात पहले इसलिए की क्योंकि पैसा कांग्रेस, कर्नाटक से भ्रष्टाचार का और विदेशों से, यूएई से पैसा, अब विदेशी धन, विदेशी ताकतें और ऐप, नए नए तरीकों के माध्यम से कांग्रेस सट्टे के पैसे से सत्ता में आना चाहती है। 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई है। तो मेरे कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पहले यहां पर हैं। क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा देता है? कांग्रेस जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। क्या यह सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से यह आदेश दिया गया था कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव में पैसा दें? राहुल गांधी जवाब दें। क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास ने से पैसा बरामद हुआ? और मेरा चौथा सवाल है कि क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए के पीएमएलए के तहत पैसा फ्रीज किया गया? क्या यह सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख रुपया से ज्यादा पैसा जब्त हुआ
और ये माना कि 508 करोड़ रुपया अब तक भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनको देने की बात कही गई। ये कांग्रेस का हाथ का निशान भी ऐसे, तो 5 सवाल भी मेरे ऐसे ही है। क्या कांग्रेस जवाब देगी? राहुल गांधी जवाब देंगे? और कुछ चैनल ने स्टिंग किए और उन स्टिंग पे भी सत्य सामने आया है। कांग्रेस सत्य के रास्ते सत्ता नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता अपनाना चाहती है। सत्य से तो बहुत दूर हो गई, सट्टे के साथ कांग्रेस दिखती है सत्ता का रास्ता अपनाने के लिए। अब मैं आ जाऊं आपके अपने राज्य तेलंगाना में। मित्रों, जब तेलंगाना का राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी में उस समय सांसद था, मैंने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या नजारे हुए, कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे, सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी। इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी। लेकिन कितने लोगों की जान गई, जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई। We step into a very short commercial break, but on the other side, we come back to more stories in brief that we in fact put out for you now. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda arrived in Jajarkot to meet the people affected by the earthquake that struck the region last night. According to reports, Jajarkot and West Rukum have suffered the most damage, with 92 deaths in Jajarkot alone. More than 140 people have been killed in the earthquake in Nepal. As the death toll continues to mount, search and rescue operations are underway. Launching a scathing attack at the Congress party, UP Chief Minister Yogi Adityanath said that the Congress government only knows to exploit farmers and that they have no right to exist even for a moment. He said, and I quote, "It is the nature of the Congress to speak lies, take power and then do corruption." ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं। BJP National President JP Nadda offered prayers at Chirahula Temple in Rewa, Madhya Pradesh. Nadda is in poll-bound state to gather support for the BJP in the upcoming assembly elections slated to be held on the 17th of November. A young girl, Akanksha, had brought a sketch of Prime Minister Modi to present it to him at his event in Kanker in Chhattisgarh on the 2nd of November. Prime Minister has now written to her thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, External Affairs Minister S. Jaishankar met with Italian President Mattarella. The two leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity, and counter-terrorism. A thick toxic haze lingers over the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concerns that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly. Time now for a short commercial break. On the other side, getting you details as Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in an overnight airstrike. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable.
LG OLED Evo, the one and only. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. इक्विटी, डेट या गोल्ड, किसी एक को क्यों चुने जब तीनों एक स्कीम में मिले? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। फ्यूचुरा डीप फ्राई पैन, परफेक्ट कढ़ाई पनीर एट होम। Wow! Heavy Gay Deep Fry Pan, Futura. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Thank you for staying with Republic. And well, as Republic reports from the front line, Hamas rocket that landed just 100 meters away from a Republic crew. The pictures that have been accessed where journalists were seen taking shelter following that airstrike launched by the Hamas. Take a look at this report. इस वक्त जो है एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सेडरोड शहर में। आप देखिए कि एक मिसाइल जो है वो दागी गई है। यहाँ से विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्टाइल दागा गया, जो कि बिल्कुल मीडिया सेंटर के बिल्कुल पास, जहाँ पर लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। और ये एक वैसा इलाका था जहां पर सिविलियंस थे और उसे ही टारगेट करके निशाना बनाया गया। आम लोग यहां पर थे, उसे टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और तकरीबन अगर बात की जाए तो चंद मीटर की दूरी पर हम लोग जहां पर मौजूद थे वहां पर आकर ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। आप देखिए ये कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि लगातार आपको विजुअल्स जो है वो दिखाएं। सलोनी यहाँ पर मौजूद हैं। सलोनी जी, बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हमने इसे खुद करीब से देखा है, करीब से महसूस किया है। बहुत मुश्किल ये दौर है क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं और अचानक धमाका होता है और गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा। आप ये देखिए शीशा पूरी तरह से टूट गया है। ये मीडिया सेंटर के बिल्कुल करीब है और गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ है। गुरसिमरन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर लगातार विजय सुरेंद्र शाह जो हैं वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद थे। जैसा एकाएक जो है अलर्ट साउंड होता है, जैसे ही हम लोग किसी तरफ शरण की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल गिरता है। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि इस तरफ आकर अगर रावत जी दिखा पाए तो आप देखिए कि कितना जिस तरह से इम्पैक्ट जो है वो सीधा इम्पैक्ट था, फ्लैट प्रोजेक्टाइल फायर किया गया था। यहाँ से कोशिश ये थी, क्योंकि ये बिल्कुल पास का इलाका है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से थी। क्योंकि आप देखिए इस तरफ जो है एक बच्चों का स्कूल है, रिहायशी इलाका है, वहां पर लगातार आपको अब अलार्म जो है वो दिखता होगा। और इस तरफ मैं रावत जी से कहूंगा कि अगर आप आए तो हम आपको सरहद जो है वो दिखा पाए, क्योंकि ठीक सामने का इलाका जो है वो गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां से लगातार हमास के आतंकी ये कोशिश कर रहे थे कि इजराइल को निशाना बनाया जाए। और ठीक सामने जहां पर एक तरफ इजराइल की तरफ फोर्सेस की तरफ से गाजा पट्टी के अंदर पूरा ऑपरेशन जारी है, उस बीच एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचाया जा सके। कोशिश हमास के आतंकियों की लगातार यह है कि ज्यादा लोग जो हैं वो इसका निशाना बने, और यही एक अटेम्प्ट किया गया आयरन डोम सिस्टम, क्योंकि एक्टिवेट जरूर था लेकिन वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और यही कारण था कि बाल जो है वो जान यहाँ पर आम लोगों की बची है। हम तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब यह प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। अब आप देखिए पुलिस यहाँ पर आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। पुलिस अभी यहाँ मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि इंसिडेंट हुए तकरीबन जो है वो अभी 1 से 1.5 मिनट का समय हुआ है, और अब जो इजराइल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगातार टारगेटिंग जो है वो सिविलियन एरियाज की यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा अब हमास के आतंकियों की है कि नुकसान पहुंचाया जाए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस आप देखिए और उसके साथ साथ पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके में जिस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर एक्ट करते हुए पहुंची है। ये जो इलाका है ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है। सलोनी जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरह का हमला हुआ, गुरसिमरन लगातार बता रहे थे गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब है, और देखिए पुलिस अब पहुंची है। पुलिस को अब जानकारी मिली है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, और अब पुलिस पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर सकती है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए अंदर जाकर पहले चेकिंग की जा रही है, क्योंकि यहीं पर नुकसान पहुंचा, इसी को एम करके ये हमला किया गया था। और देखिए पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट आप अचानक देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम साथ में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब। ये देखिए ये जो गाड़ी चकनाचूर हो गई, सुरेंद्र रावत लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी ये हमला हुआ है, हम लोग महज 50 मीटर की दूरी पर थे, गाजा पट्टी पर कवरेज कर रहे थे। इस दौरान गाजा पट्टी का जो बॉर्डर उस पर कवरेज कर रहे थे, इस दौरान ये हुआ है। और देखिए जानकारियां ली जा रही हैं, पुलिस अब तमाम लोगों से बातचीत करके देख रही है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ, यहाँ जान भी जा सकती थी। कुछ इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी हमास की तरफ से, इसे कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम भी सस्पेक्ट नहीं कर पाया, और ऐसे में ये हमला हुआ है। गुरसिमरन, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल करीब से हमने इस हमले को महसूस किया। अचानक ये होना, एक सिर्फ अलर्ट आया और ये धमाका हो गया। देखिए अब जब वॉर आगे बढ़ रहा है तो उस बीच चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आप समझिए कि तकरीबन 50 मीटर का फासला था। अगर 50 मीटर की तरफ हम उस तरफ ना होते तो ये हमारी तरफ हो सकता था, किसी और की तरफ हो सकता था। ये कई जिंदगियां लेने के लिए जो हमला किया गया है, लगातार जहां पर मूवमेंट दिखी जा रही है वहां से ही लगातार हमास के आतंकी हमला कर रहे हैं। और सलोनी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इलाके कभी सुरक्षित माना जाते थे, जो इलाके जिन्हें कि अब ये माना जाता था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्योंकि गाजा की ओर कूच कर रही है, गाजा पट्टी की ओर, तो वहां से अब अटैक नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए दोबारा से इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो साफ दर्शाता है कि हमास के आतंकियों की मंशा क्या है। सलोनी बिल्कुल गुरसिमरन, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो जो हमला किया गया, किस तरह से, कितना बड़ा हमला था। एक बार फिर आपको ले चलेंगे जरा, गाजा पट्टी यहाँ से कितनी दूर है गुरसिमरन, जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे वहां जरा चलते हैं, जिससे दर्शक समझ पाए कि हमने कितने करीब से इसे महसूस किया। देखिए आप इधर देखिए, ये वो इलाका है जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे, और इससे महज 50 मीटर की दूरी पर यह हमला होता है। सलोनी आईडीएफ जो है वो आप देखिए आईडीएफ अंदर की तरफ जा रही है। अब लगातार पूरे इलाके की सघन तलाशी भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट आप देखिए, इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्टाइल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि आपको इम्पैक्ट दिखाएं। देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है, पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये थी नुकसान पहुंचाया जाए हमास के आतंकियों की तरफ से, और वही उनकी तरफ से किया गया। अब आप देखिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो बॉम्ब डिवीजन के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं।
लगातार अब प्रोजेक्टाइल देखा जा रहा है कि जिस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया ये उसके रिमेन्स हैं उस प्रोजेक्टाइल के, यानी कि वो जो शेल अब बचा है सलोनी, ये वो बिल्कुल जो शेल बचा है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और आईडीएफ अब जांच कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सबसे पहले, और एकदम करीब से ये हमने महसूस किया। ये देखिए किस तरह से अब इंस्पेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये भी समझना है कि इसकी कितनी पावर थी और कितनी पावरफुल इम्पैक्ट ये रहा है। ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आईडीएफ अंदर पहुंच चुकी है और रिहायशी इलाकों को, सेड रोड को फिर से सेड रोड को एक तरह से अब अनसेफ जोन घोषित किया जा सकता है। तस्वीरें हम और गुरसिमरन लगातार दिखा रहे हैं आपको। गुरसिमरन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं अब बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। देखिए वो अभी भी गर्म है, अभी भी उससे धुआं निकल रहा है। देखिए सलोनी 3 से 4-5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय हुआ होगा और अभी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ शेल्स यहाँ पर गिरे हैं, देखिए ये, और दीवार पर अगर मैं रावत जी से कहूं दीवार पे दिखा पाए तो दीवार पे आपको शेल्स के निशान आप देखने को मिल जाएंगे। ये वही शेल्स हैं जिनकी तरफ से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्सेस को की गई हमास के आतंकियों की तरफ से जब ये प्रोजेक्टाइल दागा गया। ये चुनौतीपूर्ण काफी ज्यादा है क्योंकि अब वो इलाके जो माना जाता था, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब अंदर पहुंच रही हैं तो बाहरी इलाके, सरहदी इलाकों पर बहुत बड़ा अटैक नहीं होगा, लेकिन अब लगातार इस तरह के अब आप प्रोजेक्टाइल्स जब फायर किए जाएंगे तो जिंदगियां जो हैं अभी भी दाव पर हैं। जिस तरह से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक क्लोज एस्केप हमारे पूरे क्रू के लिए रहा, ये आप समझिए कि वॉर जोन में अभी इजराइल जो है वैसा नहीं माना जा सकता कि वो खतरे से बाहर है। सलोनी, बिल्कुल खतरे से बाहर नहीं माना जा सकता। अभी 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा ब्लास्ट हमने देखा और सुरेंद्र रावत ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे विजय। देखिए जो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे उसका इंपैक्ट काफी बड़ा था और अभी यहाँ पुलिस आप देख पा रहे हैं, पुलिस यहाँ मुस्तैद नजर आ रही है, अब पहुंची है पूरे इलाके की जांच करने। और ये अपने आप में बड़ा अटैक था क्योंकि मीडिया यहाँ से रिपोर्ट कर रही है, तो क्या हमास अब टारगेट लगातार देख कर रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए इस अगर आप अटैक की एक्यूरेसी कहें तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अटैक जो है वो सोच समझ के किया जा रहा है। शीशे पे मैं विजय रावत साहब से कहूंगा कि अगर रावत साहब जूम करके दिखा पाए तो कांच जो है उस पर भी आपको निशान दिख जाएंगे। ये निशान उसी इम्पैक्ट के हैं जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, सपनों में रंग भरने की बेफिक्र चिंता करो। पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा? और फिर सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है।
पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। चलो दीप जला के हर घर सजाए, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होके रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। I have obsessed over the last 10 years in just figuring out how I can make young women more unstoppable. And as an entrepreneur, you're only as good as your last big product, your last financial year success. And that's why it's not a one-time breakthrough, but you have to keep doing it over and over again. And I think as Sugar, we've been able to do that because we're obsessed. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. ISAF Small Finance Bank. Joy of banking. वोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV.
Hello and welcome to this edition of Superfast 50, the top 50 stories we're tracking here on Republic TV. Let's begin. I'm Rukma with you. Big political storm erupts over Republic sting. ED claims that it has recorded the statement of a cash courier who alleges that the promoters of the Mahadev betting app had paid 508 crore rupees to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel till now, and that it is a subject matter of investigation. Prime Minister Narendra Modi targets Congress government in Chhattisgarh over alleged Mahadev betting app scam, says they don't even spare the name of Mahadev. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Silent on the 508 crore rupees charge, Chief Minister Bhupesh Baghel is silent on that. Meanwhile, he has lashed out at investigating agencies, instead questioning why have no arrests been made as yet. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। And the BJP hits out at even as the allegations over the Congress's links to the Mahadev betting app emerge. Smriti Irani has now hit out at the Congress, alleging that hawala operations were used by the by promoters of Mahadev betting app to fund Congress's election campaign. Of hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. And as allegations and counter-allegations fly, the Congress has now said that it is a witch hunt launched against Chhattisgarh Chief Minister by the BJP. This is a clear-cut conspiracy headed by the Prime Minister of India to tarnish the image of the Bhupesh Baghel and the Congress government. And in the Nepal earthquake, earliest reports suggest 120 casualties have been confirmed and many more injured as Prime Minister Dahal orders quick relief and rescue operations. And Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda arrives in Jajarkot to meet people affected by the earthquake that struck the region last night. Rescue planes carrying people injured as the strong earthquake in northwestern Nepal arrived and began evacuation efforts. Helicopters and ground sorties also rushed to the spot to help people in need. And a thick haze engulfs the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concern that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly in the national capital. Who's as yet unborn and is in his or her mother's womb, from that unborn child to newborn, to infants, children, adults, elderly. All age groups are adversely affected by air pollution. And Agriculture Department officials in Moga district of Punjab say that over 300 farmers, 321 to be exact, are involved in stubble burning, and over 200 have been approached with fines for being involved in this.
Launching a scathing attack on the Congress. And Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, has said that the Congress government only tends to exploit farmers and that they have no right. ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है. And BJP National President JP Nadda is in Rewa in Madhya Pradesh in order to campaign and garner support for the BJP for the polls scheduled to be held in Madhya Pradesh on the 17th of November. Nadda offered prayers at the Chirahula temple in Rewa. कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, यानी घोटाले पे घोटाला. एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश, आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से बढ़ने वाला देश, ये हमको समझना है. As many as 1,276 polling stations have been prepared for the Mizoram Assembly elections slated to be held on the 7th of November, counting to take place on the 3rd of December. Congress National President Mallikarjun Kharge had a telephonic conversation with Bihar Chief Minister and JDU leader Nitish Kumar and had a word over in the alliance. And according to sources, Kharge has assured Nitish that talks over the India alliance will be carried out after the assembly polls end. FIR lodged against Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai on complaint from ABVP for allegedly promoting enmity. According to the complaint submitted to police by an ABVP office bearer, Rai has accused members of the organization of being involved in alleged incident of molestation on Banaras Hindu University campus. BJP functionary Ranjana Nachiyar arrested by police this morning for allegedly assaulting school students for hanging in a government bus. Aam Aadmi Party legislator Chaitar Vasava faces FIR after he allegedly threatens forest department officials and fires one round in the air with a pistol at his residence in Gujarat's Narmada district. His wife and 2 others have been arrested in the case. A young girl, Akanksha, had brought a sketch of Prime Minister Narendra Modi to present it to him at an event in Kanker in Chhattisgarh on the 2nd of November. The Prime Minister has now written to her thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, External Affairs Minister S. Jaishankar met Italian President Mattarella. The 2 leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity and counter-terrorism. Fire breaks out at a godown in Gondal of Gujarat's Rajkot. Fire tenders arrived at the spot and doused the flames. However, the cause of the fire has not been ascertained yet, and no reports of any casualty or damages have been reported so far. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre reports that another large group of Americans is set to depart Gaza via the Rafah crossing on Friday. Around 1,100 people, including many Palestinians with foreign passports and dozens of injured individuals, have recently left Gaza through the crossing due to an apparent agreement involving the US, Egypt, Israel and Qatar, which mediates with Hamas. Explosions and flares were visible near the Gaza border from Ashkelon as Israeli forces tightened their encirclement of Gaza City. The death toll in the Israel-Hamas conflict has touched 9,227 in Gaza, while over 140 Palestinians have died in the West Bank due to ongoing violence and Israeli raids. Indonesia's government, led by President Joko Widodo, personally oversaw dispatch of initial shipments of humanitarian aid destined for Gaza on Saturday.
The 51.5-ton aid package, which encompassed medical supplies, food, blankets, tents, and various logistical support items, was sent off from Jakarta's Halim Perdana Kusuma Air Base. President Widodo noted that the aid had been sourced from both government and civilian channels. In Sydney's Hyde Park, dozens gathered for a pro-Palestinian rally on Saturday. Participants chanted "Free Palestine" and other similar slogans while waving Palestinian flags. Similar demonstrations have been taking place in major cities worldwide since the Israel-Hamas conflict in Gaza began. On Friday, airstrikes hit the entrances of 3 hospitals in northern Gaza while medical staff were evacuating the wounded. Israeli troops tightened their encirclement of Gaza City, leading to ongoing battles with Hamas. Terrorists and widespread destruction from airstrikes. Disturbing scenes unfolded outside Shifa, Gaza's largest hospital, with numerous injured, including men, women and children, amid damaged vehicles and ambulances. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, following his meeting with US President Joe Biden in Washington, calls for humanitarian pause in Gaza, pledges to persist until all Canadians are safely evacuated. Trudeau emphasizes that Canada and the US are steadfast in their commitment to promoting efforts that safeguard human lives, including advocating for a humanitarian ceasefire. 2 rockets hit southern Israel near a gathering of journalists covering the Israel-Hamas conflict, causing minor damage to cars and windows but no injuries. It's unclear whether the rockets were intercepted by Israel's Iron Dome defense system. Tragically, the war has taken a significant toll on journalists, with 36 journalists and media workers losing their lives, as reported by the Committee to Protect Journalists, a New York-based advocacy group. Injured individuals who crossed from Gaza to Egypt arrived at Arish Hospital, and foreign passport holders were observed waiting at the border. Nearly 1,100 people, including hundreds of Palestinians with foreign passports and injured individuals, have left Gaza through the Rafah crossing in recent days, thanks to an agreement involving the US, Egypt, Israel and Qatar, which mediates with Hamas. Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari described 2 Gazas in the current conflict with Hamas. The south of Gaza is a safer area where Israeli forces concentrate people and allow humanitarian aid, while the north is a focus of complex and tough fighting. He urged Gaza residents in the north to move south to protect themselves and their families. Following an Israeli airstrike, injured and deceased individuals were brought to Nasser Hospital in Gaza's Khan Yunis on Friday. An Associated Press journalist witnessed the arrival of at least 5 bodies and several injured individuals, including children. Medical personnel provided care to the wounded as multiple ambulances arrived at the hospital. IDF shares more footage of combat operations in Gaza, where reserve fighters spotted and eliminated a terrorist squad emerging from a tunnel shaft. Israeli forces have now completely encircled Gaza City, known as the hub of Hamas military infrastructure with extensive underground networks. Leader of the Hezbollah, Hassan Nasrallah, reveals his militia is engaged in unprecedented border clashes with Israel along the Lebanon-Israel border. He also threatened further escalation as the Israel-Hamas conflict nears a month. The speech was broadcast regionally, and in Tehran, Hezbollah and Hamas supporters gathered at the Imam Hussein Square to watch. Israeli Prime Minister Netanyahu has declined U.S. appeals for a humanitarian ceasefire in the Israel-Hamas conflict. Conveys to U.S. Secretary of State Antony Blinken that Israel intends to continue its operations unless Hamas releases the hostages. Blinken, currently on his 3rd visit to Israel since the war began last month, is also scheduled to meet with leaders in Jordan on Saturday. Antony Blinken met with Lebanon's Prime Minister in Jordan as part of his mission to increase Gaza humanitarian aid and reduce civilian casualties. His call for a temporary Israeli military pause was seemingly rejected by Netanyahu. Blinken will also meet with Jordan's king and foreign ministers from Jordan and other Arab nations.
Israeli Defense Forces have unveiled footage depicting tanks and soldiers in action in the northern Gaza Strip, along with monochrome footage showcasing Israeli Air Force strikes on the Gaza Strip as Israeli forces surrounded Gaza City. They urged civilians to move south to avoid being caught in the escalating ground war. A Palestinian family separated by the Gaza Strip conflict reunited in Bulgaria after escaping via Egypt's Rafah crossing. Saika El-Sharafi eagerly awaited her son Alia, pregnant daughter-in-law Sali and 4-year-old granddaughter Saikia at Sofia Airport just hours before their flight from Athens was due to arrive. While most members of Congress have expressed strong support for Israel following the recent Hamas attack, Cori Bush, a Missouri Democrat, has diverged from the stance. She has characterized Israel's response as a war crime and an ethnic cleansing campaign, and is one of few House members who do not endorse a resolution in support of Israel. Honduras, like other Latin American countries, has recalled its ambassador to Israel to condemn what it termed as genocide and international law violations in Gaza. The Foreign Affairs Minister, Eduardo Enrique Reina, announced President Xiomara Castro's decision to recall the ambassador, citing the dire humanitarian situation faced by the Palestinian population in the Gaza Strip. In the midst of the ongoing conflict between Israel and Hamas, the United Nations issues a warning that there are no safe areas left in Gaza. All UN facilities designated for displaced people have been affected by the continuing hostilities. UN Secretary General Antonio Guterres has again urged a humanitarian ceasefire in Gaza, emphasizing that civilians have suffered for almost a month. He stressed on the need to respect international humanitarian law, protect civilians and their infrastructure, and avoid using them as human shields. US President Joe Biden and First Lady visited Maine to mourn with the community of Lewiston, where 18 people were killed and 13 others were injured in a shooting at a bar and a bowling alley last week. US Department of Defense announces additional $425 million worth of security assistance to meet Ukraine's critical security and defense needs. This includes the drawdown of security assistance from DoD inventories, valued at up to $125 million to meet Ukraine's immediate battlefield needs. Inter-Services Public Relations Wing of the Pakistan Armed Forces have revealed that the Miawali Training Air Base of Pakistan Air Force came under a failed terror attack today, which, due to the swift and effective response by the troops, was foiled and thwarted, ensuring the safety and security of personnel and assets. 3 terrorists were neutralized. 30 military personnel and a pilot have been killed so far. China successfully has sent a communication technology experiment satellite into space from the Wenchang spacecraft launch site on the southern island province of Hainan. Anthony Albanese's visit to China as the Australian Prime Minister signifies improved bilateral relations after years of strained ties over trade and security issues. His centre-left government's election in 2022 presents an opportunity for a reset. On his 3-day visit, Albanese will visit Shanghai and Beijing to meet with President Xi Jinping, making him the first Australian PM in 7 years to do so. Hardik Pandya's ankle injury has not healed, leading to his withdrawal from the tournament. That's the ICC World Cup. Prasidh Krishna will replace him in the Indian squad as confirmed by the ICC. China's perfect Friday at the WTT Champions Frankfurt was completed by Wang Manu and Ma Long, who won the quarterfinals against Zhu Qianhui and Dmitrij Ovcharov, following the steps of compatriots Wang Chuqin, Sun Yingsha and Wang Yidi. Bordeaux table Estoril recorded a surprise 1-0 win at Porto in Primeira Liga. However, this is their first win at Estádio do Dragão in 10 years. That lifts them up into 14th. Novak Djokovic books a place in the Final Four of the Paris Masters with a hard-fought 7-5, 6-7, 6-4 win over Holger Rune. Djokovic will now play either Alex de Minaur or Andrei Rublev for a place in the final. And 5th-seeded Andrei Rublev
came back from a set down on Friday to beat 13-seed Alex de Minaur for a place in the Paris Masters semi-final. The Russian player will face Novak Djokovic. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. 65-inch 4K. देख मन, फिसल मत. यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए. बस तो देख. तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना. अगली दिवाली. अपने मन की विश को मत टालो. SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. मैडम सर, छुट्टी चाहिए थी. क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने. अब सबकी पसंद अलग अलग, तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना. मिश्रा जी, बताइए. स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा. वो भी सबसे कम दाम में. तो अब छुट्टी का क्या करोगे? सोच के आई है. चलिए. आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर. इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए. स्मार्ट बाजार चलिए. New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो. जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता. टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं. ये सब क्या है? शनाया और शिवा. शिवा. अर्फी. सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है. पिंक वाला. घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार. प्यार नहीं, कमजोर TMT का भार होगा. रॉकेट सिंह. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है. मतलब रुंगटा स्टील TMT बार. जंग से न माने हार. रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. And at least 140 people have lost their lives and scores were injured after the devastating 6.4 magnitude earthquake hit northwestern Nepal. Various districts of the region were affected late on Friday night. The earthquake's impact was felt as far away as New Delhi. Here's a detailed report on the casualties and the rescue operations. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings.
As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. Time for a short break. On the other side, Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. with 7 terrain modes and autonomous level 1. The advanced MG cluster, drive unstoppable. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स एंड इंस्टेंट सैंक्शन। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने
छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Indore, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection? Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of Congress. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. ये लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing heat, Congress is on the back foot now, alleging political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And as the Israel-Hamas war continues to rage on, Republic Media Network and its largest team of reporters have been getting you minute-to-minute updates. Here's a ground report filed by my colleague Gursimran from Armistice Agreement line near the Gaza border, getting you a sense of Israel's ground preparations as it readies for a mega ground offensive. Here's that report. The war between Israel and the terrorists of Hamas has now entered day 29, and as we continue to report from the armistice line, we see the loud bangs and also the flames that are coming out from the infrastructure of Hamas. I request Vijay Surendra Rawat to show you the visuals that how the airstrikes are taking place and the black smoke that is coming out from the area that is deep inside the territory of Gaza. The place right now from where we are reporting is roughly 200 to 300 meters from the armistice line that divides the Gaza Strip from state of Israel. And now what we see is almost a couple of miles inside the territory of Gaza. These are the intense gunfight and the loud bangs of the artillery fire along with the airstrikes that is taking place. Yesterday we have seen there was multiple attempts by the Hamas terrorists to launch a barrage of rockets into the territory of Israel, that some of them were intercepted. One that came from the Hamas territory landed just 50 meters from us where we were reporting late last night, and as we report, these loud bangs can be heard. These are the artillery fires that are being conducted, and if we speak of the total number of the hostages remains at 241 that are still with the Hamas terrorists. And I'll request Vijay Surendra Rawat if he can show that side, if we can show you the armistice line that divides the state of Israel from the Gaza Strip. This is as per the agreement that has taken place in 1949. And if we speak of the operation that has been carried out so far by the Israel Defense Forces, this continues to be one of the toughest operation in which
338 soldiers of the Israel Defense Forces have lost their life in the operation, and the operation still continues. As the top brass, be it the political or the military top brass, they have made it amply clear that no pressure by the international community will affect the ongoing anti-terror operation against Hamas, and this operation, Iron Sword, will end only with the end of Hamas from the world map. And we continue to report from the armistice line as the war against terror of Israel state intensifies and enters day 29. With Vijay Surendra Rawat, Gursimran Singh from armistice line, Israel-Gaza border. Gursimran now joining us live on the broadcast. Gursimran, we just saw your ground report from Armistice Agreement line, and in fact that earlier report where there was shelling right very, very close to the media center. Of course, the situation is extremely sensitive because both sides are equally aggressive, and both sides say that it can turn worse. Israel is certainly very, very clear in its resolve that they will end what the Hamas started. In terms of the escalation, where does it stand now? Because it is going to be close to a month ever since the Israel-Hamas war started. Yes, so you have rightly mentioned, Suesha, that it is going to be close to a month that the war has started, and now the operations are on to kill the top leadership of Hamas. But after the 30 days, almost the operation is touching, we are on to the 29th day. The Israel Defense Forces are yet to get into the Gaza city, which remains to be the major point of concern for the IDF, as that remains to be the major fort of terrorists of Hamas. As we report from the coastal area of the Ashdod in the southern Israel, the roads here are bearing a deserted look. I'll request Vijay Surendra Shah to show you that how roads are wearing a deserted look. Reason being that this area has been the target of the terrorists of Hamas. They have been launching multiple airstrikes in this area, and that's why the decision was taken that some of the area, the vicinity, will be evacuated by the Israel security agencies, and those who are living here, they have been asked not to venture without any reason outside their homes, so as a precautionary measure. And as we speak, the jets are roaring in the sky, as we heard, very close to the border in the southern side also, here in the area that is the coastal region, and one of the economically very important area. This has been hit several times by the Israel Defense Force, by the Hamas terrorists, so as to target the IDF as well as the civilian. Many of the oil carriers that were coming via sea route to Israel side, they have to shift their locations, shift their routes due to the intense shelling by the terrorists of Hamas. So the Hamas terrorists are trying to hit the Israel side economically as well by targeting the coastal areas, which are one of the key economic measures that helps the state of Israel for their regular functioning. Suesha. And in terms of the civilians, Gursimran, what is it like? Because obviously that is the primary concern and has been that civilians should not be a part of what is happening between both sides. But unfortunately, they've taken the worst hit, and that is the bitter reality of a war. What more can you tell us in terms of how they have completely evacuated and which are the sensitive areas? See, right now we are reporting from the southern coastal area, and here the majority of the areas that are very close to the coast have been vacated. Since this is a city area, here you will find that the roads are bearing a deserted look, but it has not been evacuated. The people are living here inside their houses, so they are carrying out the important task which they are supposed to. But yes, they are not on the roads, not on the markets. The majority of the markets are also closed. Reason being the continuous threat from the Hamas side, because we have seen that a couple of days back on 31st of October, there was a mortar that was launched from the side of Hamas that landed on the highway. Though there was no loss of life, but that was one of the deadliest attacks that we have seen, that inside on the national highway that connects to the Ashdod from the Tel Aviv, that was hit by the terrorists of Hamas. So the Hamas is trying to increase its range, targeting the civilian areas, the cities where they can inflict maximum damage. Now coming to the civilian security, the Israel side is trying to ensure that those areas
which are under direct fire, the civilians from there are rescued. But yes, the Hamas is continuously increasing its range of target so that they can inflict maximum casualties to the Iran side. And the worst part of this war has no good for anyone. But yes, the one thing that we have seen is the civilians are the worst hit in this war against terror, be it the terrorists of Hamas who killed 1,400 civilians, including the Israel nationals, and the other side, when the retaliatory action started by the Israel, there were civilian casualties to the people of Gaza as well. So, Aisha. Absolutely good, Simran. I want to thank you for getting us all these details, and of course the other concern being humanitarian aid reaching the right hands in the Gaza Strip, because Israel has always been maintaining that civilians should not suffer. At the same time, Hamas should not get any kind of support. But then again, it is a thin line. We'll leave it at that for the moment. Gursimran, thank you for joining us. And on to other stories in brief from the war zone, as Prime Minister Modi spoke with British Prime Minister Rishi Sunak on the phone, where the two discussed the situation in West Asia, particularly the conflict between Israel and Hamas. They expressed concern about terrorism, the deteriorating security situation, and the loss of civilian lives. Israeli military has said that one of its aircrafts had hit an ambulance that soldiers assessed was being used by a Hamas unit in Gaza. Hamas-run health ministry in the Palestinian area confirmed that 20 people were killed and dozens were injured in an attack targeting a school in northern Gaza. Canadian Prime Minister Justin Trudeau called for a humanitarian pause in Gaza and vowed not to stop until all Canadians are brought out safely. Israel deported thousands of Palestinian workers who were streaming on foot through an Israeli crossing that had been sealed shut since Hamas unleashed its brutal attack to the besieged territory. Explosions and flares could be seen over Gaza from Ashkelon in southern Israel in the early hours of Saturday morning as Israeli troops tightened their encirclement of Gaza City. At least 140 people have died and dozens were injured after a devastating earthquake with a magnitude of 6.4 that struck northwestern districts of Nepal late on Friday night. The earthquake's impact was felt as far as India's capital, New Delhi. Getting you all the details in this report on the rescue operation and casualties caused in this incident. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings. As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. And illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. ये लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना,
लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं हैं। Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Hi guys, happy Diwali. हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। इस दिवाली पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा होगा जब इंडियन स्वीट्स पे बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। Just another tycoon, hustling way too early in the morning. Passing on this happy tune. Helping babies feel at ease. Aw, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a Tycoon. Volkswagen. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, joy of banking. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। Voltas Beko, tested by real moms. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dehal Prachanda arrived in Jajarkot to meet the people affected by the earthquake that struck the region last night. According to reports, Jajarkot and West Rukum have suffered the most damage, with 92 deaths in Jajarkot alone. More than 140 people have been killed in the earthquake in Nepal as the death toll continues to mount. Search and rescue operations are now underway. Launching a scathing attack at the Congress party, UP Chief Minister Yogi Adityanath said that the Congress government only knows to exploit farmers and that they have no right to exist even for a moment. He said, and I quote, "It is the nature of the Congress to speak lies, then come into power and commit corruption." सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, एक सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है,
राम भक्तों का अपमान करती है। इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। BJP National President JP Nadda offered prayers at Chirahula Temple in Rewa in Madhya Pradesh. Nadda is in the poll-bound state to gather support for the BJP in the upcoming assembly elections slated to be held on the 17th of November. A young girl, Akanksha, who brought a sketch of Prime Minister Modi to present it to him at the event in Kaker in Chhattisgarh on the 2nd of November, where Prime Minister has now written to her, thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, EAM Jaishankar met Italian President Mattarella. The two leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity and counter-terrorism. A thick toxic haze lingers over the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concerns that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly. Six terrorists attacked an Air Force training base in central Pakistani area of Miawali, Punjab, while 3 terrorists were killed before they entered the base, and the other 3 who've been cornered. Getting you all the details in this report. Pakistan's terror base in Mianwali was attacked by terrorists in the wee hours today. Pakistan's army said that it has foiled a terror attack at the Mianwali training air base in the Punjab province. 3 terrorists were neutralized while entering the base, while the remaining 3 terrorists have been cornered due to timely and effective response by the troops. However, during the attack, some damage to 3 already grounded aircraft and a fuel browser also occurred. A comprehensive joint clearance and combing operation is in final stages to completely clear the area. The Islamist terror group Tehreek-e-Jihad took responsibility for the attack on the Air Force base. Earlier last week, terrorists launched 2 separate attacks on security forces in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Bureau Report, Republic TV. Time now for a short commercial break. On the other side, getting you details of the multi-crore betting scam that has hit the Congress as Republic sting operation has become the biggest political talking point. Indore, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. ये वाला तो गूगली है। वो वाला? ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs। रंग भरा एक किस्सा है, तू वो
हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. इक्विटी, डेट या गोल्ड, किसी एक को क्यों चुने जब तीनों एक स्कीम में मिले? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव, उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Stay tuned. You're watching live and breaking at 4 p.m. I'm Suesha Sound, getting you all the top stories making news this afternoon. But most importantly, the political reactions coming in on the Mahadev betting app scam and the silence of the Chhattisgarh Chief Minister. That and much more. First, a quick check of the headlines. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे
इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है? Indore Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on the Dubai connection. Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of Congress. तो भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing the heat, Congress is on the back foot now, alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And the investigation that has become the biggest talking point in the country in the Mahadev betting scam. The first part of this investigation that revealed how the police was in connivance with the accused. The second part of this investigation that revealed the political link of the scam. And now we are getting you the third part where we focus on whether Chief Minister of Chhattisgarh was aware of the scam or not. Take a look at this report. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं सर, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा जाएगा। चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level.
Special investigative report by Republic TV. And moving on to the fourth part of this investigation, where we are trying to find out if the money was used to fund the election campaign as is being alleged. Take a look. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सबके सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI चलो खोल दी ना पड़ी मार दो इसको इतना देता था उसको इतना देता था कहीं कहीं जुगाड़ हुआ। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। पहले किया 2022 में किया था। 2022 में उन्होंने किया था। एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है, पैसे के थ्रू हुआ है। Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. A day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Bagel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting scam, Republic's four-part investigation that has now become the biggest talking point in the country. In Durg, on campaign trail, Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Congress, asking why is the Congress rattled over the Dubai connection? Listen in to what he said. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद
यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। As the political storm continues to brew over Republic's four-part investigation hitting out at the Congress, BJP has now alleged that Hawala operations were used by the promoters of Mahadev betting app to fund Congress's election campaign. Listen in. The electoral history of our country. Never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. Therefore, this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. कि ये लोग 2004 से 2014 तक जब पूरा देश चला रहे थे, तब इन्होंने देश को कितना लूटा होगा, उसकी भी एक वानगी मिलती है मुख्यमंत्री लेवल के इस भ्रष्टाचार से। आप सोचो इस पे क्या कोई बोलेगा? जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से गेमिंग ऐप के सहारे और ऐसे पैसे बनाने में लगे हैं, वो जनता के हितैषी क्या हो सकता है? जहाँ का मुख्यमंत्री बिकाऊ हो, जहाँ का सिस्टम बिकाऊ हो, और वो उन्होंने पिन अप किया भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने पैसे लेकर, करोड़ों रुपया लेकर उनको अपनी सर्विसेज दी। भूपेश बघेल जी ने अपनी पुलिस उनको दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया, जिसके चलते उनकी कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और हजारों करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का लेन देन, असीम दास का, शुभम सोनी के थ्रू भूपेश बघेल जी को पैसा मिलना, ये सवाल खड़ा करता है कि 508 करोड़ का तो दे दिए हैं, ये तो सामने आया, ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। Were there meetings between or associations between Mahadev app owners who have paid money to Bhupesh Baghel and between anti-national terrorist elements who are enemy number one of India? And if so, then Bhupesh Baghel has not taken money from Mahadev app. He has taken money from India's most dreaded terrorists. As far as the money channeling is concerned, and Dawood Ibrahim's younger brother is the owner, and based on that, the money is coming into India or to Chhattisgarh. Now, in this case, if this is the channel and these are the people behind it, then certainly you can't rule it out, terrorism money. And I'm quite sure the government, the central government and the agencies, central agencies will always work towards the interest of the country. चल जाएगा। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा, चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है
जिसने एमपी को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। इसलिए एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपा पर मध्य प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भाजपा को बहुत कम लोग जानते थे। आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज केंद्र में करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है। वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली है, नई पहचान मिली है और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, इसलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए,
5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है, मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए हैं। 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए हैं। ये लाखों रुपए के घर हैं और इनमें से अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसकी चिंता की।
इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के हर परिवार को लाखों रुपयों की मदद हो रही है। मेरे परिवारजनों, जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, एक वक्त के खाने भी किए। भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी। गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ के आता है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहनें और बेटियां हैं। शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को होती थी। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली है। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और खुशखबरी मैंने भेजी थी। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता कर दिया गया। बहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविधा होगी। साथियों, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते हैं। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों, बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को
1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये भाजपा है जिसने देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का, गौड़ संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया है। यहां नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। नए टेक्सटाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले हैं। भाजपा के शासन में 21वीं सदी का मध्य प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो रहा है। रतलाम से भी कभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, पुरानी पीढ़ी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की, रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटों को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद
ना खरीदने पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं, तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं, वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला, लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह! तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है। करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं। करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंटम बना रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Four by 4 with 7 touring modes.
and autonomous level 1. The advanced MG cluster. Drive unstoppable. व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे with attractive interest rates and instant sanction. You are the one. Unmatched. Unequaled. Unbeatable. LG OLED Evo. The one and only. हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। Take the Futura dosa tawa. Futura strong handles don't loosen. Its thickness is just right. The dosa does not stick. Futura dosa tawa. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings. As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। बस तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI Barged into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas, and 80 have been abducted from this kibbutz.
report from the ground zero. The loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. गाजा के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है। यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए हैं। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती भी दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है। About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी।
ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई. So there is an alert. There is an alert which has been given. The electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. Therefore, this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. कि ये लोग 2004 से 2014 तक जब पूरा देश चला रहे थे, तब इन्होंने देश को कितना लूटा होगा, उसकी भी एक वानगी मिलती है मुख्यमंत्री लेवल के इस भ्रष्टाचार से. आप सोचो इस पे क्या कोई बोलेगा. जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से गेमिंग ऐप के सहारे और ऐसे ऐसे पैसे बनाने में लगे हैं, वो जनता के हितैषी क्या हो सकता है. जहाँ का मुख्यमंत्री बिकाऊ हो, जहाँ का सिस्टम बिकाऊ हो, और वो उन्होंने पिन अप किया भूपेश बघेल जी को. भूपेश बघेल जी ने पैसे लेकर, करोड़ों रुपया लेकर उनको अपनी सर्विसेज दी. भूपेश बघेल जी ने अपनी पुलिस उनको दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया, जिसके चलते उनकी कंपनी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने कमाया. फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है. इस धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो. आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है. आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा. तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में. हम किशोर फिल्म में है. तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी. सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुंचते हैं. करीब उनकी तादाद 180 रहती है. घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं. इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी. बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया. ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया. हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background.
Pakistan's terror base in Mianwali was attacked by terrorists in the wee hours today. Pakistan's army said that it has foiled a terror attack at the Mianwali training air base in the Punjab province. 3 terrorists were neutralized while entering the base, while the remaining 3 terrorists have been cornered due to timely and effective response by the troops. However, during the attack, some damage to 3 already grounded aircraft and a fuel browser also occurred. A comprehensive joint clearance and combing operation is in final stages to completely clear the area. The Islamist terror group Tehreek-e-Jihad took responsibility for the attack on the Air Force base. Earlier last week, terrorists launched 2 separate attacks on security forces in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Bureau Report, Republic TV. गाजा के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है। यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए हैं। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है। फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। इस धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में। About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, तंगी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು
गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Hello and welcome. You're watching Live at Breaking with me, Shavin Sen. A top focus, a sting that has now become the biggest political talk point. Starting from Union Minister Smriti Irani to Anurag Thakur, everyone hailing Republic's sting, which raises some very uncomfortable questions for the Congress government in the state of Chhattisgarh. Bhupesh Baghel says that this is an attempt that has been made by the Bharatiya Janata Party to tarnish his image. In fact, the Prime Minister too took a dig earlier in the day. All this and much more in this edition, but up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। In Durg, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Bhupesh Baghel silent on the Dubai connection? Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expense of the Congress. तो भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on the 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question the investigative agencies. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing heat, Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. Well, starting this edition with some breaking news now coming in from Pakistan. 24 hours after Pakistan issued the deadline to refugees, Afghan refugees, it turns out that there are repercussions that are taking place inside Pakistan. In fact, 14 Pakistani army soldiers have been killed after two vehicles belonging to security forces were basically ambushed by jihadis. In fact, it turns out that in Balochistan's Gwadar district is where this incident took place. Now, the ISPR says that the vehicles were moving from Pasni to Ormara when they were ambushed. It said 14 soldiers were killed. Let me just quickly bring in my colleague
Kaswar, who's joining us on this broadcast. Kaswar, just take us through the details that you're getting in with regards to Pakistani soldiers who have been killed. Who's taken the responsibility for it, and also perhaps the little details on the incident, the exact incident that took place, because it turns out that Pakistani soldiers have been targeted in Balochistan. Give us more details on it. Sure, you rightly pointed out that last 36 hours have been very heavy on Pakistan, and yesterday 14 soldiers were martyred in an ambush, and no party has taken responsibility of the attack. But we know that Balochistan Liberation Army, in connection with, in conjunction with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, they have been attacking the installation across Pakistan, and their main target has been Pakistan's army and Pakistan's law enforcement agencies as well. So we can assume that this attack was also carried out by BLA and TTP as well. But none of these organizations has taken responsibility yet. But thing is, 14 Pakistani soldiers have been martyred, and it was happened yesterday. And according to my sources, these vehicles were actually patrolling out of Quetta and on the border of Quetta and Pasni as well, and where they was attacked by the terrorists. And according to one of my sources, a number of other soldiers have been injured, and they are rushed to a military hospital in Quetta as well. Let me tell you that so a couple of hours this incident had taken place, the terrorists attacked once again, and 5 people were killed in Dera Ismail Khan, another big city that is actually situated in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. And according to my sources, as many as 20 people were injured, and they are under surveillance in the Pakistani hospitals as well. Now, moving forward, after 6 to 7 hours, the terrorists had striken for the 3rd time, and this time they attacked a very heavily guarded Pakistan's Air Force base that is iconic and strategically important base in Mianwali. And we are getting from his sources is 9 terrorists have been parried, 3 aircraft were damaged, and Pakistan Army claimed that they were already grounded, but yet they were attacked. Right. And so we can say that 3 attacks in last 26 to 36 hours, and it has sent shocking waves across Pakistan. Pakistan's military was the prime target, and definitely when Pakistan is heading towards the next general election, such type of incident, terrorist activity says a lot. So Pakistan is in a fix, Shamanji. Next breaking Dalo. Well, in fact, Kaswar, let me just, before we play out more details of the attack that took place at Pakistan's airbase, just a quick question with regards to the Balochistan story that we are getting in right now. Over the last several weeks, we have seen that Pakistani soldiers have been targeted. Remember, in Balochistan, there is an armed resistance towards the presence of a Pakistani army to begin with. Could you give us more details about the clashes that have also taken place with the presence of the Chinese too? Well, exactly, Shaman. We all know that Pakistan and China have actually signed a multi-billion-dollar contract of China-Pakistani corridor, and Gwadar is a city where this multi-billion-dollar project ends actually, and the Chinese and Pakistani authorities have established a big, huge deep sea water port as well, and there has been, I can tell you that there has been Balochistan Liberation Army has been resistant to the Pakistani side as well. But over the time, the resistance have been met by solid, response from the Pakistani side as well. But still, thing is, it still continues, and definitely the Chinese investment is at the scale in Gwadar and Balochistan as well. And let me tell you that in last 5 years, the Balochistan Liberation Army has attacked Pakistan Army installation, and the Chinese over there
for countless time. And what is haunted Pakistani authorities that Balochistan Liberation Army have actually joined hands with Tehreek-e-Taliban Pakistan and also ISIS as well. So these three terrorist organizations are actually giving very tough time to the Pakistani. Definitely, as you rightly pointed, that Chinese are over there, Chinese investment is over there, and to some extent that has been put at stake as well. But we have seen in the past years that Balochistan Liberation Army has attacked a number of installations, and all of the installations were either of Pakistan's armed forces or the Chinese and even the CPEX as well. Even a couple of years ago, you remember that the Balochistan Liberation Army had attacked a fully guarded, heavily guarded local hotel over there. And when the attack happened, the Chinese ambassador had just left a minute before at the same location as well. So it means that Balochistan Liberation Army have been attacking on one side the Pakistan installation, and on the other hand, the Chinese have been over their radar as well. This is really something that is haunting both Pakistani sides and the Chinese sides as well. But there is no let-up in such type of attacks. And as we have seen yesterday, that the organization, the terrorist organization... Kaswar, I'll just request you to stay on because let's just move on with some more breaking news now coming in. Kaswar, I'll just request you to stay on because we'll also move on with some more breaking news now coming in with regards to that attack that took place at the airbase where 9 heavily armed jihadis had attacked a Pakistan Air Force training base early this morning in Punjab province. This comes a day after 17 soldiers were also killed in 3 separate terror strikes in the country. Now, what's important to point out here is that the Air Force base which has been attacked in Mianwali is important, quite significant, given the fact that Pakistan Air Force houses most of its fighter jets at Mianwali Air Base. Let me just quickly go back to Kaswar. Kaswar, what's the latest that you're picking up in terms of the operation that has been carried out and the significance of Mianwali Air Force Base? First, bring us up to speed about the current situation. Has the operation been over? Who exactly has now claimed responsibility for this attack? Third attack in last 36 hours that the 9 terrorists have unleashed a well-coordinated attack on Pakistan's Air Force base in Mianwali, and that was responsible with the full force. And what I am getting from my official sources is that all the 9 terrorists have been killed, but unfortunately the terrorists managed to attack already grounded 3 aircraft and other installation as well. There was partially damage that had happened to 3 aircraft and other installation inside the airbase, but largely the Pakistan security forces managed to foil this attempt as well. What is most important is that this airbase is heavily guarded, and Pakistan housed one of it. Pakistan keeps its best fighter jets at the same airbase as well. In the past, same airbase was attacked as well, and 3 years ago it was attacked. But unfortunately, in the early hours of Saturday, it was once again attacked. But this time, it appears that Pakistan security forces were very, very well informed, and they responded to the terrorist attack with full force. There was no casualty on the part of Pakistani army, but thing is, 9 terrorists have been sent to hell. And but Shamar, what is important is that it was third attack. So it appears that first the terrorists had attacked on Pakistan's security forces convoy. A few hours later, tell us. We'll just put this breaking news right now. Kaswar, could you just tell me, in terms of the damages, the losses that Pakistan Air Force had to sustain? 3 Pakistani fighter jets have been damaged in this attack. What more details can you put out? According to my sources, 3 aircraft, that was not actually fighter jets. They were surveillance aircraft which had been already grounded on the airbase. They were under repairing mode, and these 3 aircraft had to face damage in this terrorist attack. This is what I am getting from my sources.
it was the only damage on the part of Pakistan's Air Force that was caused by these terrorists. But on the other hand, it was responded by full force by the Pakistani army, and all the 9 terrorists have been killed. They were actually sent to hell by the Pakistani army. But what is important is that this heavily guarded air base, which is iconic and strategically important, only 220 miles away from Pakistan's Islamabad, Pakistan's capital Islamabad. But question have been arised that if such a heavily guarded air base can come under attack, so what to talk about other things as well. But on the other hand, we must appreciate Pakistani army that they responded with full force. Only 3 aircraft that were already grounded on the airbase, they had to face the damage, and no casualty on the part of Pakistan Armed Forces as well. Kasper, it was heinous attack, and it was third in last 36 hours. Kasper, I'll just request you to stay on as our defense experts also join us on this broadcast. I'm told Major Samarpal Tur is joining us on this broadcast. Major Tur, help us understand the significance of this Pakistani Air Force base in Miawale. Our reporter from Pakistan has been reporting that surveillance aircraft have also sustained suffered major damages, and infrastructure of the Air Force base in Miawale has taken a massive losses, taken a massive hit rather. And also more details that we are picking up right now is that at least 9 armed jihadis have been killed by the Pakistani army. But in the last 24 hours, this is the second such attack, Major Samarpal Tur, that has taken place in Pakistan. Yet another crisis is staring at the Pakistani army. The situation as on date is that the terrorist organization which carried out this attack is a part of Tehreek-e-Taliban Pakistan. So this is a new terrorist faction which has come out, and its name is Tehreek-e-Jihad Pakistan, TJP. So the style of attack is a replica of the kind of attack that was carried out in Pathankot, because there have been details that ladders had been used, wire cutters were used for cutting off the concertina wires, and they got in, and there were 2 teams. 3 terrorists went inside and 3 were outside the airbase for creating deception to confuse the security forces. So as a result, the initial attack came from the outside of the airbase, which actually occupied all the security personnel to focus on the outside of the airbase, whereas the 3 terrorists went in and they sabotaged 3 fighter aircraft, and they had these reconnaissance helicopters. They're so-called Alouette-3. So the Alouette-3 helicopters had been destroyed, and their F-7 training aircrafts have also been destroyed, and 1 K-8 fighter conversion aircraft has also been destroyed. So basically, there's been a lot of collateral damage at this airbase. And see, this airbase has a lot of tactical relevance. And it is basically there to counter any attack which comes in from the Rajasthan or the Punjab border side. So Miawale airbase is a very tactical and a critical location. What is intriguing is the failure of the Pakistani intelligence and how Tehreek-e-Taliban Pakistan is supported and recognized this new group called Tehreek-e-Jihad Pakistan. So the situation is getting more adverse, and I think this is a backlash of the result of sending majority of the Afghans back into Afghanistan from Pakistan via exit visas. So there has been a lot of discontent amongst the Afghanis. So I think this is one of the reciprocation because of that. Major Samarpal Tur, if I can just also put this into perspective for our viewers, as you were rightly pointing out, this was largely used by Pakistan for its western border. And this
damage that you are talking about is way more than what a Pakistani reporter has been telling us. It's beyond the surveillance aircraft. You're saying the fighter jets too have been damaged in this attack that has taken place. What does it essentially mean for Pakistan, given the fact that you're looking at installations? Army installations have also come under the attack over the last couple of months. Does it essentially indicate that the ISI is losing grip? Probably yes, especially when you look at the attack which unfolded at a place called Pashmi near Gwadar, where 14 Pakistani soldiers were killed. So basically, the sporadic clashes have increased, and this is a clear message to the ISI and to the army establishment of Pakistan that even their nuclear sites could be vulnerable. So I think Pakistan is slowly losing its grip onto the places near and around Balochistan, as well as at the tactical places that are being targeted. So I believe this is a clear-cut message, and with the elections coming in from December ahead onwards, so I think it is a wake-up call for the Pakistan forces, and I think they are going to have a tough time from these liberation fighters. Well, thank you very much, Major Samarpal Tur, for getting us the latest details. Just a quick roundup of what we know so far. A bit of a correction that we're just going to put out right now. The 14 soldiers of Pakistan Army who have been killed, that's from Gwadar and not from Miawale. Miawale, what we are being told right now from our reporters on the ground sending us more details, that 3 Pakistani fighter jets have been damaged. Apart from that, Pakistani surveillance aircraft has also been damaged in the attack that took place this morning. The operation still is underway, is what we are picking up right now. 9 armed jihadis have been killed by the Pakistani army during the Miawale operation that has been carried out, is what we are picking up right now. That's the details that we do have. In a separate incident that took place late last evening is where 14 Pakistani army soldiers were basically killed after 2 vehicles belonging to security forces were ambushed by terrorists in Balochistan's Gwadar district. Now, in fact, this has also been confirmed by the Pakistani army that, in fact, the vehicles were basically moving from Pasni to Ormara when they were ambushed, is what the Pakistani army claims, and 14 soldiers were killed in this incident. In fact, the Balochistan Liberation Army hasn't put out any details of it as yet. Neither have they claimed responsibility for it. That's a separate incident that has taken place. But apart from that, what we can confirm, there is another incident that took place, but this is at Miawale Air Base, where what we are picking up is that at least 9 armed jihadis have been killed. Indian defense experts do claim that a terror group has already taken responsibility for it. However, Pakistan has not made any official statement so far. Our reporters giving us more details are with regards to the fact that the armed jihadis who have been neutralized or killed, their bodies have now been put outside the Air Force base. In fact, we're not putting out those images. These are gory images that we've just got in our newsrooms just a short while back. But we do have a pictorial confirmation of the fact that the terrorists that have been killed outside the airbase. And this time, what we are being told is that massive losses have actually taken place at the airbase. And this, ladies and gentlemen, is a very strategic, significant airbase of the Pakistani Air Force. In fact, it basically keeps an eye on the western border of Rajasthan and Punjab. We give it to understand that they've suffered massive losses. On the other side, US Secretary of State Antony Blinken met with Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani
in Jordan amid efforts to build support for planning a post-conflict future for Gaza. On the other side, Durg Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection. Silent on the 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigative agencies. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. Towards the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। गुरसमन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। हम लोग नीचे थे, वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था। Israel is all prepared for the big war, the Hamas terrorists. The rockets being fired, of course, at Kibbutz Be'eri only.
बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं। Get down again, it's a missile. कम से कम दर्जन भर रॉकेट्स की आवाज आई है जो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। We have been hearing continuously an explosion. तकरीबन 50 से 70 BMP जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं। The people here who were staying, but there was a rocket that was fired. एशकुलॉन की तरफ टैंक्स जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। Multi-crore betting scam hits Congress's Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। In Durg, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection. Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of Congress. तो भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent of the 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question the investigative agencies. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing heat, Congress on the back foot now, alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. Getting in some more breaking news now from Kerala, where a Chetak helicopter of the Indian Navy met with a ground accident today during maintenance taxi checks at INS Garuda in Kochi, resulting in the unfortunate loss of life of one ground crew. A board of inquiry has already been ordered to investigate the cause of the accident. In fact, a confirmation has also now come in from the Indian Navy with regards to the loss of life. In fact, we are being told that Navy Chief Admiral R. Hari Kumar and other personnel of Indian Navy have put out a statement saying that they mourn the loss of life and pay tribute to Yogendra Singh, LAM, who lost his life in the unfortunate accident at Kochi, and extend heartfelt condolences to the bereaved family. Remember, this is the statement that has been put out by the Indian Navy. Let me quickly go across to my colleague Ashwin, who's joining us from Kochi. Ashwin, walk us through the details that you're picking up. A statement now being issued by the Indian Navy. What we do know is with regards to the fact that the accident that took place has taken the life of one Navy soldier.
Well, Shravan, what has been confirmed by the Navy source is that Yogendra Singh LAM has lost his life in an unfortunate accident in Kochi that took place at around 2:30 p.m. today. Now, it has been reported that the Indian Navy chopper was in fact on a training flight and crashed as soon as it lifted from INS Garuda. Now, there are also reports that have confirmed that the training was going on, and as soon as there was a lift off of the particular stateless helicopter, the helicopter crashed, and it has led to loss of one life, and we're also getting to understand that one person is being treated at the hospital in Kochi as well. Now, this mishap took place at around 2:30. It's been confirmed at the runway of the Navy for headquarters in Kochi. And this is what we have confirmed. One person has lost his life and one with minor injury has also survived. Chavan. Well, thank you very much, Ashwin, for getting us the latest detail. Well, shifting focus now to our coverage of the Israel-Hamas war, where the war rages on. Republic Media Network and its largest team of reporters have been getting you minute-to-minute update. In fact, this is a ground report filed by my colleague Gursimran Singh from the Armistice Agreement line near the Gaza border, which gives you a sense of the current ground preparation as it readies for a mega ground offensive. Take a look at this report. The war between Israel and the terrorists of Hamas has now entered day 29, and as we continue to report from the armistice line, we see the loud bangs and also the flames that are coming out from the infrastructure of Hamas. I request Vijay Surendra Rawat to show you the visuals that how the airstrikes are taking place and the black smoke that is coming out from the area that is deep inside the territory of Gaza. The place right now from where we are reporting is roughly 200 to 300 meters from the armistice line that divides the Gaza Strip from state of Israel. And now what we see is almost a couple of miles inside the territory of Gaza. These are the intense gunfight and the loud bangs of the artillery fire along with the airstrikes that is taking place. Yesterday we have seen there was multiple attempts by the Hamas terrorists to launch a barrage of rockets into the territory of Israel, that some of them were intercepted. One that came from the Hamas territory landed just 50 meters from us where we were reporting late last night, and as we report, these loud bangs can be heard. These are the artillery fires that are being conducted, and if we speak of the total number of the hostages remains at 241 that are still with the Hamas terrorists. And I'll request Vijay Surendra Rawat if he can show that side, if we can show you the armistice line that divides the state of Israel from the Gaza Strip. This is as per the agreement that has taken place in 1949. And if we speak of the operation that has been carried out so far by the Israel Defense Forces, this continues to be one of the toughest operation in which 338 soldiers of the Israel Defense Forces have lost their life in the operation, and the operation still continues. As the top brass, be it the political or the military top brass, they have made it amply clear that no pressure by the international community will affect the ongoing anti-terror operation against Hamas, and this operation, Iron Sword, will end only with the end of Hamas from the world map. And we continue to report from the armistice line as the war against terror of Israel state intensifies and enters day 29. With Vijay Surendra Rawat, Gursimran Singh from Armistice Line, Israel-Gaza border. इस वक्त जो है एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सैडरोड शहर में। आप देखिए कि एक मिसाइल जो है वो दागी गई है। यहां से विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्टाइल दागा गया, जो कि बिल्कुल मीडिया सेंटर के बिल्कुल पास, जहां पर लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। और ये एक वैसा इलाका था जहां पर सिविलियंस थे और उसे ही टारगेट करके निशाना बनाया गया। आम लोग यहां पर थे, उसे टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और तकरीबन अगर बात की जाए
तो चंद मीटर की दूरी पर हम लोग जहां पर मौजूद थे वहां पर आकर ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। आप देखिए ये कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि लगातार आपको विजुअल्स जो है वो दिखाएं। सलोनी यहाँ पर मौजूद हैं। सलोनी जी, बिल्कुल, यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हमने इसे खुद करीब से देखा है, करीब से महसूस किया है। बहुत मुश्किल ये दौर है क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं और अचानक धमाका होता है और गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा। आप ये देखिए, शीशा पूरी तरह से टूट गया है। ये मीडिया सेंटर के बिल्कुल करीब है और गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ है। गुरसिमरन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जी देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर लगातार विजय सुरेंद्र शाह जो हैं वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद थे। जैसा एकाएक जो है अलर्ट साउंड होता है, जैसे ही हम लोग किसी तरफ शरण की तरफ भागने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल गिरता है। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि इस तरफ आकर अगर रावत जी दिखा पाए तो आप देखिए कि कितना जिस तरह से इम्पैक्ट जो है वो सीधा इम्पैक्ट था। फ्लैट प्रोजेक्टाइल फायर किया गया था यहाँ से। कोशिश ये थी क्योंकि ये बिल्कुल पास का इलाका है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से थी। क्योंकि आप देखिए इस तरफ जो है एक बच्चों का स्कूल है, रिहायशी इलाका है, वहां पर लगातार आपको अब अलार्म जो है वो दिखता होगा। और इस तरफ मैं रावत जी से कहूंगा कि अगर आप आए तो हम आपको सरहद जो है वो दिखा पाए, क्योंकि ठीक सामने का इलाका जो है वो गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां से लगातार हमास के आतंकी ये कोशिश कर रहे थे कि इजराइल को निशाना बनाया जाए। और ठीक सामने जहां पर एक तरफ इजराइल की तरफ फोर्सेस की तरफ से गाजा पट्टी के अंदर पूरा ऑपरेशन जारी है, उस बीच एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है लगातार ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचाया जा सके। कोशिश हमास के आतंकियों की लगातार यह है कि ज्यादा लोग जो हैं वो इसका निशाना बने और यही एक अटेम्प्ट किया गया आयरन डोम सिस्टम, क्योंकि एक्टिवेट जरूर था लेकिन वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और यही कारण था कि बाल जो है वो जान यहाँ पर आम लोगों की बची है। हम तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब यह प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। अब आप देखिए पुलिस यहाँ पर आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। पुलिस अभी यहाँ मौके पर पहुंच रही है क्योंकि इंसिडेंट हुए तकरीबन जो है वो अभी 1 से 1.5 मिनट का समय हुआ है और अब जो इजराइल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुंची है क्योंकि अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगातार टारगेटिंग जो है वो सिविलियन एरियाज की यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा अब हमास के आतंकियों की है कि नुकसान पहुंचाया जाए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस आप देखिए और उसके साथ साथ पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके में जिस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर एक्ट करते हुए पहुंची है। ये जो इलाका है ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है। सलोनी जी, बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरह का हमला हुआ, गुरसिमरन लगातार बता रहे थे, गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब है और देखिए पुलिस अब पहुंची है। पुलिस को अब जानकारी मिली है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है और अब पुलिस पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर सकती है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए अंदर जाकर पहले चेकिंग की जा रही है क्योंकि यहीं पर नुकसान पहुंचा, इसी को एम करके ये हमला किया गया था। और देखिए पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट आप अचानक देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम साथ में आपको दिखाएंगे बिल्कुल गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब। ये देखिए ये जो गाड़ी चकनाचूर हो गई, सुरेंद्र रावत लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी ये हमला हुआ है, हम लोग महज 50 मीटर की दूरी पर थे, गाजा पट्टी पर कवरेज कर रहे थे। इस दौरान गाजा पट्टी का जो बॉर्डर उस पर कवरेज कर रहे थे, इस दौरान ये हुआ है और देखिए जानकारियां ली जा रही हैं। पुलिस अब तमाम लोगों से बातचीत करके देख रही है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ यहाँ जान भी जा सकती थी। कुछ इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी हमास की तरफ से। इसे कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम भी सस्पेक्ट नहीं कर पाया और ऐसे में यह हमला हुआ है। गुरसिमरन, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल करीब से हमने इस हमले को महसूस किया। अचानक ये होना, एक सिर्फ अलर्ट आया और यह धमाका हो गया। देखिए अब जब वॉर आगे बढ़ रहा है तो उस बीच चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आप समझिए कि तकरीबन 50 मीटर का फासला था। अगर 50 मीटर की तरफ हम उस तरफ ना होते तो ये हमारी तरफ हो सकता था, किसी और की तरफ हो सकता था। ये कई जिंदगियां लेने के लिए जो हमला किया गया है, लगातार जहां पर मूवमेंट दिखी जा रही है वहां से ही लगातार हमास के आतंकी हमला कर रहे हैं। और सलोनी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इलाके कभी सुरक्षित माना जाते थे, जो इलाके जिन्हें कि अब ये माना जाता था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्योंकि गाजा की ओर कूच कर रही है, गाजा पट्टी की ओर, तो वहां से अब अटैक नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए दोबारा से इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो साफ दर्शाता है कि हमास के आतंकियों की मंशा क्या है। सलोनी, बिल्कुल गुरसिमरन, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो जो हमला किया गया, किस तरह से, कितना बड़ा हमला था, एक
बार फिर आपको ले चलेंगे जरा गाजा पट्टी यहाँ से कितनी दूर है गुरसिमरन, जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे वहां जरा चलते हैं जिससे दर्शक समझ पाए कि हमने कितने करीब से इसे महसूस किया। देखिए आप इधर देखिए, ये वो इलाका है जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे और इससे महज 50 मीटर की दूरी पर यह हमला होता है। सलोनी, आईडीएफ जो है वो आप देखिए आईडीएफ अंदर की तरफ जा रही है। अब लगातार पूरे इलाके की सघन तलाशी भी की जा रही है क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट आप देखिए, इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्टाइल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि आपको इम्पैक्ट दिखाएं। देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है, पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये थी नुकसान पहुंचाया जाए हमास के आतंकियों की तरफ से, और वही उनकी तरफ से किया गया। अब आप देखिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो बॉम्ब डिवीजन के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अब प्रोजेक्टाइल देखा जा रहा है कि जिस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया ये उसके रिमेन्स हैं उस प्रोजेक्टाइल के, यानी कि वो जो शेल अब बचा है सलोनी, ये वो बिल्कुल जो शेल बचा है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और आईडीएफ अब जांच कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सबसे पहले, और एकदम करीब से ये हमने महसूस किया। ये देखिए किस तरह से अब इंस्पेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये भी समझना है कि इसकी कितनी पावर थी और कितनी पावरफुल इम्पैक्ट ये रहा। ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आईडीएफ अंदर पहुंच चुकी है और रिहायशी इलाकों को, सेड रोड को फिर से सेड रोड को एक तरह से अब अनसेफ जोन घोषित किया जा सकता है। तस्वीरें हम और गुरसिमरन लगातार दिखा रहे हैं आपको। गुरसिमरन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। देखिए वो अभी भी गर्म है, अभी भी उससे धुआं निकल रहा है। देखिए सलोनी 3 से 4-5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय हुआ होगा और अभी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ शेल्स यहाँ पर गिरे हैं, देखिए ये, और दीवार पर अगर मैं रावत जी से कहूं दीवार पे दिखा पाए तो दीवार पे आपको शेल्स के निशान आप देखने को मिल जाएंगे। ये वही शेल्स हैं जिनकी तरफ से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्सेस को की गई हमास के आतंकियों की तरफ से जब ये प्रोजेक्टाइल दागा गया। ये चुनौतीपूर्ण काफी ज्यादा है क्योंकि अब वो इलाके जो माना जाता था, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब अंदर पहुंच रही हैं तो बाहरी इलाके, सरहदी इलाकों पर बहुत बड़ा अटैक नहीं होगा, लेकिन अब लगातार इस तरह के अब आप प्रोजेक्टाइल से फायर किए जाएंगे तो जिंदगियां जो हैं अभी भी दाव पर हैं। जिस तरह से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक क्लोज एस्केप हमारे पूरे क्रू के लिए रहा, ये आप समझिए कि वॉर जोन में अभी इजराइल जो है वैसा नहीं माना जा सकता कि वो खतरे से बाहर है। सलोनी, बिल्कुल खतरे से बाहर नहीं माना जा सकता। अभी 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा ब्लास्ट हमने देखा और सुरेंद्र रावत ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे विजय। देखिए जो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा था और अभी यहाँ पुलिस आप देख पा रहे हैं, पुलिस यहाँ मुस्तैद नजर आ रही है, अब पहुंची है पूरे इलाके की जांच करने। और ये अपने आप में बड़ा अटैक था क्योंकि मीडिया यहाँ से रिपोर्ट कर रही है, तो क्या हमास अब टारगेट लगातार देख कर रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए इस अगर आप अटैक की एक्यूरेसी कहें तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अटैक जो है वो सोच समझ के किया जा रहा है। शीशे पे मैं विजय रावत साहब से कहूंगा कि अगर रावत साहब जूम करके दिखा पाए तो कांच जो है उस पर भी आपको निशान दिख जाएंगे। ये निशान उसी इम्पैक्ट के हैं जो अभी इस जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया था उसके फटने से हुआ है। हर एक दीवार पर निशान है, शीशे पर निशान है, कांच पर निशान है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है ये खत्म होने वाली नहीं और हमास का अंत सलोनी नहीं हुआ है। ये हमास जो है वो इजराइल के लिए नासूर बनता जा रहा है और जिस तरह से लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो से हमारी बड़ी टीम लगातार आपको अपडेट्स दे रही है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमास के पास अभी भी बड़े हथियार मौजूद हैं जिससे वो अंदरूनी इलाकों में बड़ा प्रहार कर सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए आईडीएफ को और ज्यादा चौकन्ना अब रहना होगा क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये देखकर, सोचकर, समझकर हमला किया गया है। अपने आप में ये तस्वीर बहुत बड़ी है गुरसिमरन। जो हम सोच रहे थे कि 28 दिन हो चुके हैं, युद्ध कुछ ठंडा पड़ा है, हमास की तरफ हथियार कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान से तस्करी करके लाए गए हैं या ये कहीं यूक्रेन के हथियार तस्करी करके लाए गए हैं, ये सच्चाई दिख रही है इस हमले के बाद। देखिए स्वाभाविक तौर पर ऐसा लग रहा है कि ईरान को किस तरह से मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह के आतंकी अब उतने कमजोर नहीं हैं जितने हम समझ रहे थे। अभी भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो टीम्स हैं वो आप देखिए यहाँ पर अंदर जो है हर एक ट्रेसिस को निकाला जा रहा है क्योंकि इन ट्रेसिस को एनालाइज किया जाएगा कि आखिरकार इनकी क्षमता कितनी ज्यादा थी, कितने ज्यादा पावरफुल जो है वो यहाँ पर थे ये हथियार जिन्हें की इम्पैक्ट किया गया सिविलियन इलाकों की, क्योंकि अब सिविलियन इलाके बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ये लगातार जो डिफेंस जो बॉम्ब एक्सपर्ट टीम है ये एनालाइज करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसका जो इम्पैक्ट था वो कितने दूर तक जा सकता है। देखिए 50 से 100 मीटर तक इम्पैक्ट गया है, लेकिन वो क्योंकि एक वी शेप में इम्पैक्ट जाता है इसलिए अलर्ट के बाद जो लोग हम लोग नीचे थे वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था। लेकिन अब चुनौती जो है इजराइल के लिए यह बड़ी है कि ये कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम
जो फेल हो रहा है उससे आम लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे पे जा रही हैं। सलोनी, बिल्कुल आयरन डोम सिस्टम यहाँ पर फेल होता नजर आया क्योंकि वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाया इस प्रोजेक्टाइल को और इतना बड़ा हमला हो जाता है। हम और गुरसिमरन खुद उस वक्त मौजूद थे, हम लोग तुरंत नीचे बैठ गए। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई है, हमने हेलमेट लगाया हुआ है। ऐसे में जो प्रोजेक्टाइल के जो रेसिडुअल पार्ट्स हैं वो जरूर छिटक कर इधर उधर जाते हैं, तो खतरा लगातार बना हुआ है और इंसानी जानों को खतरा बना हुआ है। यानी कि अभी भी सेड्रॉट की बात करें या इजराइल के किसी भी इलाके की बात करें, वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमास फिर से हमले कर रहा है। देखिए स्वाभाविक तौर पर हमास जो है वो लगातार अब उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां पे वो कैजुअलिटीज काउंट ज्यादा कर सकता है। हमास की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाया जाए और उसी बीच ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा हमला लगातार हमास की तरफ से किए जा रहे हैं। सलोनी, बिल्कुल, तो ऐसे में आप समझिए कि अभी भी यहाँ पर जो आईडीएफ की टीम है वो पहुंची हुई है, एक एक चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन अब लगातार सवाल ये बना हुआ है कि क्या हमास अब फिर से हमले तेज करने वाला है? जो धमकी दी जा रही थी कि फिर दोहराएंगे, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? विजय सुरेंद्र रावत के साथ मैं सलोनी श्रीवास्तव और गुरसिमरन सिंह के साथ इजराइल गाजा बॉर्डर। Israel is all prepared for the big war, the Hamas terrorists. The rockets being fired, of course, at Kibbutz Be'eri only. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं। To get down again, it's a missile. कम से कम दर्जन भर रॉकेट्स की आवाज आई है जो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। We have been hearing continuously an explosion. तकरीबन 50 से 70 BMP जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं। The people here who were staying, but there was a rocket that was fired. एशकुलॉन की तरफ भी टैंक्स जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। इस वक्त हम किशोर फिल्म में है, तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुँचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas.
फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में। इस वक्त हम किशोर फिल्म में है, तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुंचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद Confident about the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, तंगी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. गाजा के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है। यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए हैं। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती भी दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है।
Confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Hello and welcome. You're watching the Saturday edition of This Is Exclusive with me, Shavan Sen. Ladies and gentlemen, 24 hours ago, when that big political sting we put out, little did we know that it's going to be the biggest talking point. Yes, it has now become the biggest talking point, with the Prime Minister raising this during the rally in Durg. Union Minister Smriti Irani as well as Anurag Thakur also now raising questions about the role of Chief Minister Bhupesh Baghel. While Republic TV has already put out the sting, raising some very uncomfortable questions for the Congress government in the state of Chhattisgarh, the Enforcement Directorate has now made some sensational allegations against the Chief Minister. In fact, his name finds a mention in the remand application, a story that we broke 24 hours ago. But tonight, we'll take you through the impact of that big political sting. All this and much more on this edition of This Is Exclusive. But first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। In Durg, Prime Minister asked why is Bhupesh Baghel silent on Dubai connection. Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of the Congress party. पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on the 500 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigative agencies. ये लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight strikes.
More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake rescue and relief operations underway. Ladies and gentlemen, just 3 days before Chhattisgarh goes to polls, Republic sting exposing the political link in the Mahadev betting scam has now become the biggest talking point and has created ripples across the political sphere. Now let's take you through what the sting actually reveals. Republic was in Chhattisgarh for 9 days on the hunt for key players who were involved and aware about the multi-crore betting scam. It led us to 3 key characters. Abhishek Pallav, a serving IPS officer who was the superintendent of police of Bhilai in 2022 when the probe in the scam was in full throttle. The next person we stung was Dilip Chandrakar, uncle of Mahadev app promoter Saurabh Chandrakar, and lastly, the insider who knew every operation of the betting scam, Saurabh Shukla. Now, these stings essentially revealed how the betting scam was a police-guided and protected operation. And mind you, that's not what we are saying. It's the SP who himself had to say it's a police-guided, police-led operation. Now, the sensational revelation made was how the Chief Minister was completely aware about the scam, and not just aware, but perhaps, as the allegation has been leveled by the uncle of the main accused in this particular case, that the government has actually been demanding money from the main accused. Whether there is any truth in the allegations that have been made, that is for the investigative agencies to really find out. Republic's sting has now got a validation with the Enforcement Directorate's remand copy yesterday making a mention of the Chief Minister. They say that the Chief Minister allegedly received 508 crore rupees. Now that too from the promoters of the app. Republic's sting has exposed the political patronage in the Mahadev betting scam. And now it's upon the agencies to take this entire investigation forward. Remember that our sting has created ripples. But before we get those reactions, take a look at how a daring colleague, Harsha Chandwani, uncovered India's biggest political scam. A 200 crore wedding in UAE's Ras Al Khaimah this February brought the Mahadev betting app into the crosshairs of probe agencies. This big fat wedding blew the lid off the multi-crore Mahadev online betting app scam, and celebrities like Ranbir Kapoor, Badshah, Jacqueline Fernandez and 20 others are under the ED scanner. However, what was brushed under the carpet was the political backing in a multi-crore betting scam, and only Republic has unravelled India's biggest political scandal. 1 state, 9 days and 2 cities. Republic was on the lookout for the key players in the multi-crore scam. The first few days was about hunting down the key characters and identifying them. Disguised as a documentarian, in my hands were 3 key characters who knew about the inside details, operation and involvement of system in the multi-crore, the biggest betting scam. The first one to be stung was Saurabh Chandrakar's uncle Dilip Chandrakar. And here is what he confessed to me on cam. पता नहीं रसूल से खाने बोल रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में, कुछ चैनल चला रहे थे, तो क्या भी पकड़ा है आपका दोनों चैनल चल रहा है, चंद्रभूषण राय, चंद्रभूषण वर्मा, चंद्रभूषण वर्मा तो इसका प्रिय है ना, मुख्यमंत्री का, तो जान नहीं दिया परसों, बस गया था इंडिया में वही थे वो लोग, चारों को वहीं थे, अच्छा, तो जिस दिन मैं पहले दिन गया ना 25 अगस्त को, तो पूरी मिलिट्री फोर्स था वहाँ गन में, एक मार गया तो कोई गन में नहीं, क्योंकि लोग को सौंप दिया था उसको पुलिस वालों को, पुलिस से फिर लोग 6 दिन का रिमांड पे लिए पीडी वाले, अच्छा, वापस कोर्ट से, सीधे भी वही था, अब लोग 40 दिन चले गए। The first tip-off that he gave Republic was about how cops to politicians, top to bottom in the hierarchy, everyone was aware and involved in the scandal. This was not it, but what he revealed further was sensational.
He claimed that Saurabh Chandrakar pulled the strings from Dubai to ensure he is let off scot-free in investigation. He admitted how Saurabh was given the tip-off about the raid and was monitoring everything. क्या वो लोग सीसी कैमरा में देख रहे थे? अच्छा, यहाँ से वहाँ का वहाँ भी कैमरा लगा ना, वहाँ ब्रांडेड कैमरा है वो वाले घर में। तो उस वाले कमरे क्या का कैमरा दुबई ऑपरेट करते हैं? कहीं भी चले जाओ आप, ऑल इंडिया विश्व में कहीं भी चले जाओ, ये मोबाइल में दिखेगा ये पूरा कैमरा। मेरे को सौरभ को रात में 2:30 बजे फोन आया ना, तो लोग गए 10 बजे रात को। अच्छा, भोरता अपने पैसे मंगाया, खाना अपने पैसे मंगाया, 5 बार कॉफी पिलाया, बस एक बार नाश्ता दिया, फलों काट के। वहाँ बज जाओगे 1 बज जाओगे। क्या बोला फिर? क्या पूछा वही सब पूछा। अच्छा, सुबह भैया का फोन आया, दिल्ली का, पूरी अलमारी का फोटो भैया खोल के। The involvement of the system was exposed by Saurabh Chandrakar's uncle, Dilip. What is more shocking is that he revealed how the poor were cheated and their money was put into election campaign. He claimed that the Congress councillors were involved and everything was happening in cahoots with the system and the police. शुरुआत में इसने अपना सिस्टम और ये पुलिस महकमे में कैसे बनाया, कैसे इसको पता चला कि नहीं प्रोटेक्शन चाहिए तो काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ वहाँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, बड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, ऐसी होगा कहीं जुगाड़ होगा। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू, इतना मोटा तो चेयर है उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी विशेष पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया सौरभ को, सबके चाचा यही है, सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। Our pursuit to uncover the nexus took us to the another key character, IPS Abhishek Pallav, who first investigated the scam. The man who closely tracked down the investigation. He revealed how policemen were direct beneficiaries of betting, and the entire nexus wasn't just limited to policemen and constables, but extended to the ASI level officers as well. सर वो ऐसा है, हमारा वैसा सिस्टम है, ये अधिकारी का है, वो अधिकारी का है। देखो यार, ना तो मैं इसमें ना लेता हूँ ना देता, मैं ना उसको संरक्षण दिया हूँ आज तक, ना मेरा काम है। CM साहब के पुत्र ने बोला कार्रवाई करनी है, बोले सर वो तो हमारा सेट है, हम जाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए सर, हम लोग देख लेंगे। वो CM को सेट कर लेंगे अपने आप, क्लेम कर रहे हैं, तो बोलने में तो बोस्ट करने में तो कुछ नहीं जाता। कहते हैं सर आपको अब दोबारा कभी कोई नहीं बोलेगा सर कि हम पे कार्रवाई करनी है सर। नहीं, देखिए क्या है कि अधिकारी कलेक्टर्स का इसमें डायरेक्ट रोल नहीं। महादेव ऐप में मैं कलेक्टर्स के बाकी रोल में रहे, DMF में घोटाले में रहा है, जल मिशन में रहा है, मतलब आपका कोल में रहा है, ये इसमें IAS सुब्रत साहू साहब का थोड़ा साथ है, ACS से PM साहब के, तो उनका बनता था टुटेजा साहब से, तो थोड़ा बात होती होगी। तो फिर महादेव करके एक था, वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, तुम्हारी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हारी दिया था आपने उसको, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? तो मुझे कुछ लड़के बताया कि सर इसमें 3 पैदल चलाता है नागपुर में, तो क्यों ज्वाइन करेगा? मैंने कहा सस्पेंड कर दो इसको, मैंने को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया तो पी जाओ, जब फ़ोन कराना शुरू कर दिया, ये हो गया। मैंने कहा तो उस टाइम मैंने इसकी डी करने के लिए ये प्रभात को दिया कि इसकी डी करो। प्रभात ने इसके वाइफ का बैंक अकाउंट निकाला, 3.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन था उसके बैंक अकाउंट। मैंने कहा यार तो बर्खास्त किसी लोग फ़ोन आया फिर बर्खास्त मत कीजिए, हमारा आदमी है तो हमारा आदमी है, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत कांस्टेबल और TI वगैरह। अब मैं क्या बोल दूँ, फिर क्या हुआ कि ये 4 भाई हैं। This brought us to our next question to Abhishek Pallav. Was the system aware? Did the state know about the illegal 400 crore betting scam? And this is what Abhishek Pallav, the IPS, revealed. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ।
कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। मुझे लगता है एक्साइज का थोड़ा उनको आइडिया था, टोल का भी था, इतना इंटेंसिटी है उसका नहीं था। महादेव का आइडिया पूरा होगा सर, आइडिया भी होगा वो, लेकिन वो ये नहीं सोचे थे कि इन सब स्कैम में इतनी तरफ फंस जाएंगे पूरी तरह से। A scam running to the tune of over 400 crore. And the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. To reveal how the transactions were made, we stung the third key character, Saurabh Shukla. He is a Mahadev betting app insider, a man who has closely worked with the main accused and arrested and let off 2 times. The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund the election campaign. मैम सीएम है, उसके पास तक बहुत पैसा गया। अब ये पकड़ाया तो अभी है मैम, सिर्फ 65 करोड़ दिखाए, शो हुआ है कि छापा पड़ गया तो चलिए 65 करोड़ पकड़ा गया। सब हवाला के जरिए पहुंच रहा है, सब टोटल हवाला है, कुछ नहीं है। मेन हवाला ही तो है मैम, ये जो पैसा जो इतना तो करोड़ रुपए जो जा रहा है सब हवाला के थ्रू पहुंच रहा है। और हवाला का काम रायपुर में भी अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा चला रहे हैं ये। A 200 crore wedding putting Bollywood celebrities under scanner. And scam taking place in cahoots with the politicians and the system. Though the money trail is yet to be established by the Enforcement Directorate and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. If proven true, this will certainly be India's biggest political scam. Bureau Report to Public TV. Well, joining us on This Is Exclusive tonight is my colleague Piyush Ori from Raipur. In a short while from now, we'll also be joined by our intrepid reporter Harsha, who's got us that big political scam that she's uncovered it after 9 days of investigation. In fact, my colleague Piyush Ori has also been in Raipur for the last 24 hours. Piyush, you've tried speaking to some of the Congress leaders. They seem to be perhaps in a tizzy. No one wants to really respond to that sting that has been done by the public TV. If there is nothing really wrong and they believe that this is an attempt that has been made by the Bharatiya Janata Party through the Enforcement Directorate to tarnish their image, what prevents them from commenting on what an independent news network has done? But I can tell you, that one thing of which you can understand and you can sense while talking to the Congress leaders over here in Raipur is that they're definitely rattled by what this independent news network, by what we and Republic have done, by what we, our courageous reporter Harsha has done. Because yesterday when we went to the Congress reporters and tried to confront them with very hard facts, we were asked not to speak these tough questions and we were asked to move out of their Congress headquarters. Having said that, definitely they know about the sting which we have done over here in Raipur and Chhattisgarh in Bhilai, and they definitely seemed rattled, nervous and were just not willing to answer some very tough and pertinent questions which we at Republic did try to put in front of them. Having said that, we also tried to having a word with some of the BJP leaders over here and tried to understand from them. And the revelations from them have also been very shocking and revelatory. They have said that perhaps it is now very important for the investigative agencies, that includes not only the Enforcement Directorate but also the Central Bureau of Investigation, to come forward and investigate this matter, because the strains of this corruption may not just be limited to money laundering, but it may also be linked to the threats of national security, because there are fears that this amount of money has also gone to terror funding. Now, how true are these claims? It is only going to be coming out after there is a thorough investigation. But one thing is for certain, the kind of sting, the kind of very explosive details which we as Republic, which our correspondent Harsha has brought out, has definitely
made a lot of people over here sit up and take notice of this massive scam which was happening over here in the land of Chhattisgarh. Back to in the studio. Piyush, I'll request you to stay on with us. Piyush, I'll just request you to stay on with us. Finally, we get our intrepid reporter, Harsha, who's joined us on this broadcast. Harsha, congratulations to you first. And perhaps this has become the biggest talking point this election season. Little did we know that this is going to reach to such a point that it's going to make the Congress party feel so very uncomfortable that they chose not to respond to the allegations that have been leveled against them. And these are some very serious allegations. Give us a sense of what you're picking up from while speaking to the other leaders. You've tried speaking to some of the opposition leaders on this entire sting. As usual, you've had to hear some of the rhetoric coming in from the opposition leaders. But what's the sense that you're getting in from the ground post the sting? Shubham, this is Republic exclusive investigation. In those 9 days when I was there in October, and in those times we had dig deeper, and the entire nexus is vast, it's massive. And today in National Capital, while we spoke to several opposition leaders from Left Party, from JDU to the BSP leaders, all of them were on the side of Congress, where they were stating that it is the election season and why ED is working right now on the election season. In fact, few Congress leaders like Acharya Pramod Krishnam went on by saying that if Bhupesh Baghel is guilty and if he is involved in the Mahadev betting app scam and if he is shielding the promoters, then he should be arrested by the Enforcement Directorate. But there is a divide in Congress in this entire Mahadev betting scam as well, because some leaders not on camera but off camera have been speaking that this betting scam wouldn't have gone unnoticed without the involvement of the political party. The huge political links surely would have been involved in shielding the main accused Saurabh Chandrakar. But while we spoke to the BJP leaders in National Capital, Shravan, many were saying that Enforcement Directorate has a proof and evidence of involvement of Bhupesh Baghel, and now the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, should be arrested and the case should be registered against him, because not only he is shielding but also he is the main partner who is in with Mahadev betting scam since the year 2020. In fact, Manjinder Singh Sirsao went on by saying that Bhupesh Baghel not only from 2019 he had been taking money from Mahadev betting app promoters, but now during the election season and before that in by-elections as well, separately money was asked from the Mahadev betting app promoters. So this nexus is huge, and it doesn't stop only at Bhupesh Baghel, but Congress High Command is equally involved in this entire nexus of the Mahadev betting scam. So we are getting several reactions from National Capital, with BJP hitting out at Congress Party for shielding the prime accused Saurabh Chandrakar, who fled to Dubai from Bhilai. Back to you. Well, thank you very much, Harsha, as well as Piyush Ore, for getting us the latest details on this big political scam that has been unraveled by Republic TV. Let me just quickly also take you through some of the reactions that are coming in first with regards to the union ministers. But before that, let me just take you through some breaking news coming in once again from the state of Chhattisgarh. This is coming in from Narayanpur, where just 2 days before the polls, the Red Army has called out a major attack. Naxalites have killed a BJP leader in Narayanpur. After the incident, there was commotion in the area. A confirmation now coming in that the BJP leader has been killed in Chhattisgarh. Let me just quickly go across to my colleague Piyush Ore, who is joining us on this broadcast, and we'll also try and go across to our executive editor Aishwarya Kapoor, who's confirming this news for us. But we'll try and connect with Piyush Ore in a short while from now. Till that time, let's just quickly take you through of what we know so far. BJP leader was killed in Narayanpur. That's the area where the incident took place. In fact, it's the hands of Naxalites is what we are picking up. More details are coming in with regards to the movement of the leader when this incident took place. Let's try and connect with our executive editor Aishwarya Kapoor for more details, as we've also accessed details of the leader's movement. In fact, remember, this is considered to be a sensitive area.
where this killing actually took place. The BJP leader was on campaigning duty when we're picking up that this incident took place. The Maoists are essentially suspected to be behind the killing of the BJP leader. That's big, once again raising questions about the fact that has the law and order situation in the state of Chhattisgarh once again come under the scanner. In fact, remember the assurance that was also made by the Chief Minister that with regards to dealing with the Maoists, he's been able to perhaps neutralize them. Let me quickly go back to my colleague Piyush Ori, who's joining us from Raipur, getting us the latest details. Piyush, bring us up to speed with regards to this incident that has taken place. A confirmation now coming in from our executive editor Aishwarya Kapoor that the BJP leader has been killed. What more details are you picking up? Correct, like one. We'll try and connect with. We seem to be having a problem with Piyush's audio line. We'll try and reconnect with Piyush in a short while from now. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. We'll get you more details on this story that's just come in right now with regards to the killing of a BJP leader in Narayanpur. On the other side, Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas.
personalities who have rewritten history by paving a new path of progress. Hello and welcome to Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. On today's episode, we have with us Vinita Singh, the visionary founder of Sugar Cosmetics, who has flipped the narrative being a woman entrepreneur. Let's take a look at her incredible journey. Meet Vinita Singh, CEO and co-founder of Sugar Cosmetics and an IIT and IIM graduate. What started as a dream moved on to redefining beauty standards. Soon after her graduation, Vinita was offered a package of 1 crore rupees by an investment bank. However, Vinita's path took a turn where she declined the offer to follow her passion of becoming an entrepreneur. With unwavering dedication, Vinita transformed Sugar into a global beauty brand celebrating individuality and empowerment. Vinita, welcome to Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. And before we deep dive into this conversation, we'll begin with a rapid fire round. So let's see how fast you are. Coffee or tea? Coffee. If you could time travel, which era would you visit? I would go 100 years into the future and figure out if we manage to survive the climate crisis. That's true. Which book are you currently reading? Good Strategy, Bad Strategy. Your go-to comfort food? Rajma chawal. Oh, mine too. Early bird or night owl? Early bird. Work from home or work from office? Work from office. I have 2 small kids, so work from home is almost impossible. I understand. City life or the country? Living in the city, but holidaying in the countryside. Yes. Top 3 essentials for a successful entrepreneur? I would say number 1 is resilience, number 2 is resilience, and number 3 is resilience too. That is so right. And on that note, Vinita, as we talk about your journey and how it has been in all these years, where did and how did Sugar Cosmetics come about and what inspired you to start it? Firstly, thanks so much for doing shining the spotlight on women pioneers, much needed. Yes. I won't say what inspired me, I would say who inspired me. It was young women. We were running an e-commerce business and I started seeing that over the last 10 to 15 years, we've seen women literacy go up by about 15%, which finally gave young women financial freedom, the freedom to dream, the freedom to follow their own passion. And what that meant was that they were making their own choices. And they needed beauty products that fit in with that lifestyle. They wanted products that were really long lasting, that suited the Indian complexion without them having to feel that they were made to wear something that was 3 shades lighter. When we started, we really thought that we'd be only a brand for young women and sold online. But as luck would have it, young women now make about 65% of the Indian demographic, and a lot of the disposable consumption happens via young women. So we are very lucky that Sugar is now the 3rd largest color cosmetics brand in India, used by women across all age groups. You're an IIT, IIM. What was your childhood like? A very nerdy childhood, and did you always know that you had the business acumen in you? Were your parents also very encouraging of it? I did have a very nerdy childhood. I grew up in the AIIMS campus. Both my parents are actually medical researchers. My dad was in AIIMS, my mother in ICMR. So there was nobody in our distant family who had a business. And I don't think we ever spoke about starting up in those years. You know, I was growing up in the 1990s in Delhi, and it was just about, going from a government job to a private job, and but still maintaining that security net. And I wanted to build something for women because I thought that women consumers would really see a shift, because my generation was very different. We were unstoppable, we were empowered, and I just thought that it would be a good opportunity to create a business, but I didn't know where to start. So many years I fumbled, started up a few businesses, they didn't work out, tried raising capital, but it was almost impossible. There were many years of struggle. Over the last
15 years, I finally figured out where my passion was in building a beauty brand out of India, made in India, made for Indian women. You know, I get to every month sign the paycheck of thousands of people, including 3,000 women. And that makes me so proud. I don't think any job, no matter how much it paid, would have given me that kind of joy and fulfillment as this gives me. So it turned out to be a topsy-turvy journey, but I am very grateful that when I was 23, I had the courage to not take up a regular job and actually start up. That is exactly what I wanted to talk to you about next. That period obviously wasn't easy. You passed out in 2007. There were 2 failed business ventures before Sugar Cosmetics happened, and you had a plum job offer and a lot of money staring right at you to take the easier path and get on it. Probably investment banking was a plausible option. But you left all of that, kept that away, and you stayed focused that this is what I want to do. What was that period like? Yeah, it was very hard, honestly speaking. There were many years that I struggled to even make ends meet. And I will say that there were many days where I regretted my decision. I just, even had all kinds of self-doubt that maybe I'm not born to be an entrepreneur. Before becoming an entrepreneur, I had read so many books by other entrepreneurs. And then when I went back and started thinking about all those role models who I had in those books, Steve Jobs, Richard Branson, Larry Ellison, I realized that they were all these visionary, charismatic men who were, geniuses of their time. And I suddenly thought that, maybe as somebody who's an honest, hardworking woman, this wasn't the right career choice. And, I started even thinking that maybe women don't make good entrepreneurs. And I had self-doubt where I wondered if I should just, try to get a job. But as an entrepreneur, when you've tried building something for 5 years and you failed, you wonder what kind of job you'll get, because you do everything from jhadu pocha to recruiting people to sales to coding. It's a variety of different skills, but there is no compounding of a specialization. And I think that probably 5-6 years into my entrepreneurial journey was my lowest point, where I really wondered if women can make good entrepreneurs. And I really thought if I should quit and go back to looking for a job. And I just thought, let me try one more time. And I'm very grateful for the decision. While the next adventure also did not immediately work out, it pivoted to sugar. And now I'm so grateful for the journey, because not only through my story, but through a lot of other women entrepreneurs I know, I now realize that entrepreneurs come in all shapes, sizes, genders, age groups. I think good things take time. And as long as you have the patience, I think anybody can be an entrepreneur. You just need to have the patience and the ability to show up every single day for your consumer, day after day for many years. And that, I think, a lot of women have the power to do, because they're very resilient. Women, especially moms, just have the kind of resilience and strength that nobody talks about. And I think that makes us great entrepreneurs. And I now think that it's time to, have more books that showcase those stories. Again, going back to the time when you were setting up all of this, were there gender stereotypes that you had to witness? What were the challenges that you went through? Were there doubts in terms of will she be able to do it? Men working below you, reporting to you, but exercising that sense of dominance. Did you experience that? What was it like? I think it's so much better now, and which is why I keep telling women that it's the best time to build. But really 10 years ago, it was very hard. I have been in investor pitches where I've been told to my face things like, we invested in a certain woman entrepreneur many years back, and she decided to prioritize her family later, so we're not investing in any more women. And I remember thinking that you've made a decision on an entire gender based on the sample size of one. And I've been in conversations where, my husband and I started Sugar, and he was still doing a job where I was doing this full time. And an investor said that until he comes on board full time, we cannot consider
investing in this because we're anyway skeptical about couple founders, but just banking on a woman as a founder is going to be very tough for us. So I think there is one part of it which is the bias, which I think to an extent still exists. But 10 years ago, it was also okay to vocalize these biases. I've seen situations where there have been doubts where, depending on what you were wearing, people really questioned how skillful you are. So I remember in my previous company, I used to sell to HR managers, and I remember thinking about wearing, say, a salwar kameez or graying my hair to look older and to look more respectable, because I thought that as a young girl in her 20s, nobody would believe that I could bring something special to the table. And yes, I for a long time thought that the only people who would want to work for me or report to me would be young women, because for men who were older or more experienced, they wouldn't think they could have anything to learn from me. But I think in the last 5 years, I've seen a lot of it change, and I'm very optimistic about the next 10 years, what they hold. I think people have really given up talking about their biases, so I'm now waiting for them to put their money where their mouth is, which means more capital going to women. But honestly, Suesha, if you look at numbers, still less than 8% in senior leadership is women across the board. Even in entry-level jobs, it's still 30-35%. So, that there is still that resistance where women get dropped off somewhere. And I feel that it is on to entrepreneurs like us who are leading organizations to really try and change that. But it's going to take a long time. I still feel that there are many women who come to work at Sugar and other organizations who go through that struggle of not having enough support at home, feeling that guilt of balancing these multiple roles, and just feeling that burden of carrying the weight of the families on their shoulders single-handedly. And I feel that, apart from whatever organizations are going to do, this has to change. I am one of the lucky ones who had parents who inspired me to be ambitious. So I'm not afraid to be ambitious openly. And I'm one of the lucky ones who has her spouse supporting at home. But for a lot of women out there, they are told to put their ambition inside the closet, because they'll be judged. They won't get liked if they come across as too bold or too ambitious. And there are so many women who don't have that support from their families, and it is a struggle. So I think our vision of becoming the $5 trillion economy, it really rests on getting this gender balance right at workplace. And McKinsey's report says that if we don't increase participation of women by at least 10%, we're putting $800 billion of GDP at risk, because you can't be in a country where half the population is not getting the opportunity or the support to come to work. So I feel very grateful that I'm getting to do this, and I built my own company, and I think it's on to me to create more opportunities for other women. I have a seat at the table now, so I have to create more seats for other women. But it is, I feel, still quite hard out there in corporate India. You are one of the fiercest sharks, and which is why I say, did you ever see yourself reaching this platform one day? All your learnings through this journey, and the very many women entrepreneurs that you get to witness being on this platform, and how the workforce and the attitude is really changing in that sense. What are your learnings? I feel that in my own journey, one of the biggest challenges was access to capital, and the numbers are, Suesha, still dismal. It's like less than 2% of the capital goes to women-run companies. Out of 100%, less than 2%. And even globally, that number is just 2 to 3%. A lot of women like me, and like a lot of women that come to raise funding from me, we're going to create our own opportunities by building our businesses. And women-run companies employ more women. And I think then those women start their own businesses. So this is this flywheel, I feel, that we're starting, which is going to be unstoppable for getting more women into work. Wonderful. And on that note, Vineeta, we slip into a short commercial break, but we'll continue with this conversation on the other side. And in fact, a lot more that I want to ask you. And for all our viewers watching right now, do stay tuned to Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. We'll be back on the other side.
Welcome back to Techno Phantom. We Flip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. With me on the show is Vinita Singh. Vinita, we've been talking about some very interesting things, and while we continue to talk about that more, you know, the thing about pioneers is that they think differently. Would you say for you to have a homegrown product, understand the needs of an Indian woman, how would you say all of this just worked well together? I think the single biggest insight for me has been that the consumer is the queen. And I have obsessed over the last 10 years in just figuring out how I can make young women more unstoppable. Even if you crack a great product, there's a next year. And as an entrepreneur, you're only as good as your last big product, your last financial year success. And that's why it's not a one-time breakthrough, but you have to keep doing it over and over again. And I think as Sugar, we've been able to do that because we're obsessed. I am personally obsessed with just making young women unstoppable. And just how passionate you are and how passionately you talk about this is clearly rubbing off on me. But then again, to understand that little girl Vinita, who was raised in Delhi, what was the inclination towards makeup behind all the books? Yeah, it was very low, honestly. My father was a professor, and he really thought that he wanted me to, be the best in the world in my career, whether as an engineer or in business or whatever I take up. And he just felt that everything else was a distraction. So I was discouraged from even, like piercing my ears. So I managed to do that after I graduated when I was in IIT. And I think, so I was the typical nerd who didn't know much about makeup growing up. So my obsession with this category started from the consumer's obsession. And I realized that young women think a lot about makeup because makeup makes them express themselves, makes them feel confident, makes them, do something for themselves. And that's how it started. And I feel that, what could have been my biggest weakness, the fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup, turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and, would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. And I felt that, that connection happened because I was that girl. And I feel that many times, people with absolutely, who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. And in India, women, even if they've had access to makeup growing up, they're still underconfident. They'll buy 100 products, but they'll wear only 20 because they feel conscious. So I think I also managed to get us on that journey of educating India on makeup. And I want that to be for every single Indian woman out there who's still afraid to use all the makeup in her repertoire but can learn on Sugar's Instagram page and then try it out for herself. And as an angel investor yourself, how much can you really contribute to one trying to not just make and flourish his or her own business? Like, what is your role and what is your advice to those coming to you? So honestly, as an angel investor, apart from just knowing which horse to bet on, you can't really have much impact. So which is why I look for the best founders, and then I really just let them build the business that they want to, because a lot of businesses like ours also go through pivots where you start with something, then you face a roadblock, then you move in a different direction, and then you figure out what your breakthrough is. And that journey the entrepreneur can only take. So as long as the entrepreneur is somebody who's committed that I am going to give my next 10 years, 20 years to this, I would love to bet on them, irrespective of what product or market they're operating in. I feel that they'll be able to figure it out. So just be patient and stay at it. Don't burn a lot of capital. Listen to your consumer. Your consumer will take you to the right answer. Like our consumer took us to Sugar. It wasn't the other way around. You're a mother of two, successful. What's your advice again to mothers or even to young women who dream and want to dream on, but you wouldn't want to think of it as a roadblock? What holds a lot of women back is guilt
and it operates both ways. And for mothers especially? For mothers especially. I myself went through the journey where when I was pregnant for the first time, I hid it from our investors till almost a month before the delivery, till they figured it out by themselves. Because I thought that, when my business is struggling, if I tell my investors that I am about to have a child, they will judge me and, they will think that I was such a disappointment that I raised money from them and then let them down by deciding to prioritize having my family. And, when I actually had my first child, I realized that they were so supportive about it. I myself, felt, just having that little pillar in my life made me so much stronger, even as an entrepreneur. And rather than it becoming my weakness, it was my biggest strength. And I'm not ashamed for times where I have to prioritize them over my work or vice versa. I don't feel guilty. There are times where I've talked to my husband openly, where I tell him that, you have to tell me I'm doing a great job, because women have the tendency to keep going into that trap of guilt. And all my friends are this club where, they keep reminding me I'm doing fine. It is just, I think, a lot of, narrative around women can't have it all, etc., that's holding us back. But time's up. I think we own our own space now, and it's time to, do whatever our heart tells us to. Fantastic. And I must ask you, Vinita, that how do you think technology has empowered women to challenge and shatter traditional gender norms and empower women to take control of their lives? I think technology has been very powerful for women. It has given us financial freedom, because there are so many tools that women can finally use to not depend on the men in their lives for that financial freedom. And it has given us freedom over our time. Women at different stages in life prioritize how they want to work, but technology makes it much easier for them to do it in the way that works for them. And as we wrap this conversation, your message to the young generation? My message to young generation, especially women, would be don't ever be afraid to be ambitious. Put your ambition out there, dream big, and feel empowered to go after your dreams. Don't hesitate. Vinita, it has been lovely talking to you, and like I said, that you're such a believer, you're so passionate yourself that I can only imagine how that has led you to the success that you see today. I want to wish you all the very best for all your future endeavors, and thank you for talking to us today. Thank you so much, and thank you once again for celebrating women pioneers. It's a really important mission that you're going after. Absolutely. But we possibly can't leave without taking a selfie. Are you ready? Always ready. What could have been my biggest weakness, the fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup, turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Let Vinita's story be an example of courage and resilience. We'll be back in the next episode with yet another interesting story. Until then, stay tuned to Techno Phantom Reflip 5G presents Women Pioneers of India in association with Republic TV. फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। इस धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में।
पुरुषोत्तम की शूट फिल्म में है। तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुँचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। It was 5:30 on the morning of 7th of October when the terrorists of Hamas barged into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas and 80 have been abducted from this kibbutz. Hello, welcome. You're watching the biggest story tonight with me, Shavin Sen. Ladies and gentlemen, 24 hours ago, Republic TV broke India's biggest political scam, a sting operation which has raised uncomfortable questions with the Congress party. It proves the very fact that some within the Chhattisgarh government have been backing the owners of Mahadev app, those who have been accused of running a scam worth about 5,000 crore rupees. All this and much more on this edition of the biggest story tonight. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. In Durg, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Bhupesh Baghel silent on Dubai connection. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators fund the election expenses of Congress. Silent on 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question the investigative agencies. Facing heat, Congress on the back foot now, alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight strikes.
A day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Bagel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting scam, Republic's four-part investigation has now become the biggest talking point. In fact, in Durg on the campaign trail, Prime Minister has now launched a scathing attack on the Congress party, asking why exactly is the Congress rattled over the Dubai connection. Listen in to what the Prime Minister had said, and then we also play out some of the reactions that are coming in on India's biggest political scam. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। Well, as a political storm continues to brew over Republic's four-part investigation hitting out at the Congress party, the BJP has now essentially alleged that Hawala operations were used by the promoters of Mahadev betting app to fund the Congress election campaign. Now, that was a charge that was levelled by Union Minister Smriti Irani. In fact, lauding Republic TV for the investigation and the expose on this biggest political scam was none other than Union Minister Anurag Thakur. First, listen in to what Union Minister Anurag Thakur had to say on the Mahadev betting scam and also Republic's expose, and then we play out the reactions that are coming in.
रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जहां पे महादेव बेटिंग ऐप, जहां पे अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का नाम साफ साफ सामने आ रहा है और 508 करोड़ रुपए का स्कैम कहा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को बधाई देता हूं सच्चाई सामने लाने के लिए। भ्रष्टाचार कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में उसको आपने उजागर किया है, लेकिन एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार हुए। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, पेपर लीक स्कैम हो, हर जगह करोड़ों रुपए नहीं हजारों करोड़ रुपए के घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो भूपे करो, और ये भूपे करके मुक्ति पाओ, यानी कि मुख्यमंत्री का दफ्तर और वो सब लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो सब कुछ। दूसरा, महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का लेन देन, असीम दास का, शुभम सोनी के थ्रू भूपेश बघेल जी को पैसा मिलना, ये सवाल खड़ा करता है कि 508 करोड़ का तो दे दिए हैं, ये तो सामने आया, ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी को जवाब देना चाहिए कि ये भ्रष्ट सरकार और विदेशी ताकतों का विदेशी पैसा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए कि विदेशी ताकतें क्यों, विदेशी पैसा क्यों, और सट्टे से सत्ता का रास्ता, सत्य तो दूर की बात हो गई इनके लिए। सर, साथ ही साथ जो मेन अक्यूज्ड है उनके अंकल ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मनी डिमांड किया है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो उनकी इमेज खराब करने के लिए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, किसी को क्या पड़ी है मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने की? अगर मांगा है तभी दिया है, वो तो पैसे का हिसाब दे रहा है। और दूसरी बात, एक नहीं अनेक, जैसा मैंने कहा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मैं तो घोटाले पे घोटाला वहां पे हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि लूट की खुली छूट थी, भूपे करो और मौज करो। और साथ ही साथ एक टॉप अक्यूज, जैसे रिपब्लिक ने एक स्टिंग किया जिसमें टॉप ऑफिसर ने ये भी कहा है कि there were ways to make that main accused run away from India, and Bhupesh Baghel was aware about this particular scam. ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है। उनके अपने दफ्तर के नजदीकी अधिकारी, उनको अभी तक जांच चल रही सीबीआई ईडी की। मुख्यमंत्री का कार्यालय ही इतना भ्रष्ट होगा, वो क्यों होता है? जैसा नेता होगा वैसे कर्मचारी होंगे। तो अब देश ने चेहरा जान लिया कांग्रेस का कि राहुल गांधी जी ने खुली छूट दी थी कि लूटो 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 और भूपे करो, और भूपे एटीएम करके सब कांग्रेस को चंदा दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते थे। Rural history of our country. Never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. Therefore, this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. कि ये लोग 2004 से 2014 तक जब पूरा देश चला रहे थे, तब इन्होंने देश को कितना लूटा होगा, उसकी भी एक वानगी मिलती है मुख्यमंत्री लेवल के इस भ्रष्टाचार से। आप सोचो इस पे क्या कोई बोलेगा? जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से गेमिंग ऐप के सहारे और ऐसे ऐसे पैसे बनाने में लगे हैं, वो जनता के हितैषी क्या हो सकता है? जहाँ का मुख्यमंत्री बिकाऊ हो, जहाँ का सिस्टम बिकाऊ हो, और वो उन्होंने पिन अप किया भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने पैसे लेकर, करोड़ों रुपया लेकर
उनको अपनी सर्विसेज दी, भूपेश बघेल जी ने अपनी पुलिस उनको दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया, जिसके चलते उनकी कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाया। Silent of the 508 crore rupees charge, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel is now questioning the investigative agencies, instead calling the allegations completely baseless. Bhupesh Baghel has now asked why no arrests have been made so far. सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कह रहे दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है, मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं। On the back foot, the Congress is now alleging a political witch hunt by the BJP against Bhupesh Baghel. Listening to what the Chief Minister had to say. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं। वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत की जो सीमाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ पुलिस करती है? Despite the scathing charges against Bhupesh Baghel, the India Alliance partners have now come to Congress's defence. While the JDU has questioned the timing of the action, National Conference has alleged that the probe agencies are being misused by the Modi government. Listen to what they have to say. जितनी भी गैर बीजेपी सरकारें हैं देश के अंदर, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे टीएमसी की हो, सब सरकारों पर ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाना चुनाव से पहले एक सोची साजिश के तहत है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर तीसरे दिन एक अपोजिशन का बंदा जो है, जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बंगाल में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये बाकी जगह क्या है? ये फरिश्ते हैं सारे, ये आसमान से उतरे हैं, है सब कुछ है, लेकिन थ्रस्ट गवर्नमेंट का है अपोजिशन को दबाना, और इसका हथियार इस्तेमाल हो रहा है। Let me also quickly bring in my colleague Piyush Ori, who's joining us from Raipur, getting us the latest details. Piyush, in terms of the Bharatiya Janata Party's reaction, we've heard the union ministers reacting sharply
on the sting that was done by Republic TV. What is it that the local leaders have to say? Because there is perhaps one big question that many have been raising, that why exactly hasn't the local leaders all this while made this an election issue? After all, poor people too were cheated. So you raised a very important point, Shravan, and we also today raised this point with the opposition leaders over here with Bharatiya Janata Party of why actually have they now been so proactive and aggressive as far as raising the issue of the involvement of Bhupesh Baghel perhaps in this entire case is concerned. So for their defense, they said that they were on this charge ever since this scam surfaced way back in 2019, and from there it only increased from 2020 and 2021. In fact, they said that because they were aggressive, they were proactive in maintaining that it was not only the law enforcement officials but also higher political leaders who were involved in trying to help the main accused in this entire case, identified as Saurabh Chandrakar. The first case was registered in Andhra Pradesh, which resulted in them coming and investigating the entire matter over here in Chhattisgarh, following which the pressure really resulted in the Chhattisgarh police also coming in. However, they maintained that because the Chhattisgarh police was reluctant, because perhaps they may have been hand in glove with the accused, it was the involvement of Enforcement Directorate and central agencies which ultimately came forward and investigated this entire case. So yes, as far as the local leadership is concerned, they say that it is not an election issue for them, but they have been raising this issue ever since this case has surfaced way back in 2019. Having said that, they now feel that this case now extends much beyond the election issue, and there is an issue of national security also which is concerned, and they say that even after elections they will make sure that the investigating agencies, the central investigating agencies now investigate this entire matter thoroughly and make sure that all those who are accused, which also include the top echelons of the political leadership over here in Chhattisgarh, be arrested for perhaps what they have done. Back to the studio. Well, thank you very much, Piyush, for getting us the latest details. More and more reaction are now pouring in after this mega investigation done by Republic TV's SIT. I have given the proof to the ED people. I have given the proof that this shell company, who were responsible, what is this shell company, what purpose it was formed. That picture never got made. It was shelved. But the money went to Pakistan, and through the ISI, it ended up in Pakistan, where the Pakistani version of Mahadev app was launched. And again, then the money chain began. From Pakistan, the money started coming back to CM House. कांग्रेस की आदत यही कि वह भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को मतलब अलग-अलग बातें करके बीजेपी के खिलाफ भूमिका रखना, उससे मतलब उनको कोई फायदा हुआ नहीं। और भूपेश बघेल की इंक्वायरी चल रही है और अभी मतलब भूपेश बघेल का बंद हो जाएगा खेल और उनको जाना होगा जेल। Ladies and gentlemen, Republic has brought you an exclusive investigation into the Mahadev betting scam. Now, it's a four-part investigation, but one part of the investigation which has certainly found a lot of resonance is the very fact that you have key members taking the name of the Chief Minister's office and also those who have been connected to the Chief Minister. In fact, it also essentially reveals how the police was in connivance with the accused. Now, in part 2 of this investigation, we had basically revealed the political link of the scam, and now what we are getting to you is part 3 of the Republic Super investigation, where we essentially focus whether the Chief Minister of Chhattisgarh was actually aware of the scam. Take a look. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam.
सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. हो business बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का #1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212. Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. Take the Futura dosa tawa. Futura's strong handles don't loosen. Its thickness is just right. The dosa does not stick. Futura dosa tawa. बर्जर डैम स्टॉप लगा। इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे। बर्जर डैम स्टॉप। No changer, डैम स्टॉप फटाफट। I have obsessed over the last 10 years in just figuring out how I can make young women more unstoppable. And as an entrepreneur, you're only as good as your last big product, your last financial year success. And that's why it's not a one-time breakthrough, but you have to keep doing it over and over again. And I think as Sugar, we've been able to do that because we're obsessed. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV.
कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे ठा। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered and now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas. कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे ठा। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। पर इन्होंने तो बोला था बेस्ट प्राइस देंगे। क्या बात कर रहा है? नो हिडन चार्जेस बोला था। क्या बात कर रहा है? ऑफर्ड प्राइस और चेक में तो बहुत डिफरेंस है। क्या बात कर रहा है? तूने करेक्ट बोला था, गाड़ी ट्रू वैल्यू पे ही बिकती है। सही बात कर रहा है। हमारे 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स मानते हैं बेस्ट प्राइस के लॉलीपॉप पे नहीं, गाड़ी बिकती है सिर्फ ट्रू वैल्यू पे। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू। फ्यूचुरा डीप फ्राई पैन, परफेक्ट कढ़ाई पनीर एट होम। वाओ, हेवी गेट डीप फ्राई पैन फ्यूचुरा। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है।
इलाका है, ये कोस्टल रीजन है, इसे निशाना बनाकर फायर किया गया था। लगातार रावत जी सलोनी देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितने सारे जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो यहाँ फायर किए गए हैं और आप आवाज भी धमाके की सुन सकते हैं। अचानक ये अलर्ट हमारे फोन पर आता है और देखिए आवाज सुनिए, पूरा इलाका गूंज रहा है। आयरन डोम सिस्टम लगातार उसे निष्क्रिय कर रहा है। गुरसिमरन, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रावत जी लगातार विजुअल दिखा रहे हैं, 10 रॉकेट जो हैं वो इजराइल पर दागे गए हैं हमास की तरफ से। इस वक्त हम कोस्टल रीजन से रिपोर्ट कर रहे थे, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकाएक जो है बैराज रॉकेट्स के यहाँ पर दागे जाते हैं। लोग आप देखिए पूरे जो है इस इलाके में अलर्ट पर आ गए हैं। ये काफी ज्यादा जो है तकरीबन 30 से 45 सेकंड में ये अलर्ट रहता है। अब जो इस खतरा है इसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। रावत जी से कहूंगा अगर आपको ऊपर दिखा पाए तो अब हवा में आप देखिए जो एक अटेम्प्ट किया गया था हमास के आतंकियों की तरफ से, उसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। लगातार ये खतरा अभी भी बना हुआ है। सामरिक दृष्टि से बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, कोस्टल रीजन है। यहाँ पर पहले भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट जो हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि तेल के कई बड़े जो टैंक्स हैं, जहाज हैं, वो यहाँ पर आते थे। लेकिन पिछले तकरीबन 28 दिन की अगर बात की जाए जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, तो लगातार इस इलाके को हमास के आतंकी निशाना बना रहे। और हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ये लगातार विजय सुरेंद्र रावत आपको विजुअल सिखा रहे हैं। और इस बीच मैं रावत जी से कहूंगा पर अगर दिखा पाए तो अभी भी आप दिखेंगे लगातार। Now that the attempt of the terrorist of Hamas to inflict damage to this coastal region has been averted. So there was almost 10 rockets that were fired from the area that is just opposite to this side. So it is the south of the Israel and the north of the Gaza from where the attempt was made. And I'll request Vijay Surendra Rawat to show you that even as we speak, there is a regular surveillance that is also being done on the coastal region and also the areas that are very close to the borders. Because from here what we see is the left side of the coast, that is from the northern Gaza. There was an attempt to launch a barrage of rockets into the territory of the coastal region of Ashdod. The attempt has been foiled now by the Iron Dome interceptor system, and now you will see that the how the surveillance is being done on ground. This is one of the major attack that has taken place in last couple of hours, where there has been an attempt to target not only the coastal region but also the civilian areas. Yes. Yeah, Gulsimran, you are reporting live right now from Ashkelon, Israel, and we just saw very live, very visuals of latest attacks that are happening right now. So could you please give us a sense of the situation that is there on ground right now? Because Israel had said some time back that they are going to amp up their attack against Palestine and completely wipe it off. So how do you see this whole attack is going to take shape now? See, this was another attempt by the Hamas terrorists to inflict maximum damage to the Israel side. This was targeted at the coastal region, because I'll request now Vijay Surendra Rawal to show you this area. This is one of the important strategic assets when it comes to the economic activities of the state of Israel. This is a port and important coastal region where the ships from the different countries carrying the oil or other essentials, they come, and here it is considered as the economic hub of the Israel. This is in the southern portion, the coastal region of Ashdod, and here an attempt was foiled by the Iron Dome system. The attempt was made when around 10 rockets that were launched from the side of Hamas that was intercepted by the Iron Dome system and has been destroyed now. But this has to be seen that here the population remains in the coastal areas. This area has not been evacuated by the Israel Defense Forces or the Israel security authorities based on the threat perception. But now here also there have been regular attempts by the Israel, the side of Hamas to inflict damage, because Hamas knows one thing, that the way they have been carrying out the intensified operation the IDF is carrying out inside the Gaza, they want to divert the IDF from there, and that's why they are now targeting more and more areas that have been that have been far off from the area of the border of the Gaza, but they want to make the people here also the victim of the Hamas terrorism. Yes.
Gulsimran, how is the whole the geopolitical situation over there shaping up? Because as you're just saying that you're standing next to a coastline, which is very important strategically, business-wise, and also Israel has rejected US's calls for, ceasefire for humanitarian cause. So, what is the current political situation over there, apart from the military actions that are taking place and also ramping up? See, if you look at the political situation, the Israel side, the political leadership has made it amply clear that they won't be going back. There is no going back from this place, and the front, what is now on the cards is the complete wipeout of the Hamas from the world map. Now they are firm on their stand, and they are saying that no matter how much the political leadership or political pressure remains to be it from the United States or from any other country, they won't budge and they will continue